Dudmal sir will be giving a lecture on the topic Importance of Shatriyakal in Diagnosis, being chaired by Dr. Subhash Waghe sir. Secondly, Dr. Archana Gharge ma'am will be giving lecture on the topic Clinical Application of Trividha Pariksha, being chaired by Dr. Vijay Poddar sir. And lastly, Dr. Jyoti Megadambar ma'am will be giving lecture on the topic Understanding Basic Methodology for the Diagnosis, being chaired by Dr. Rajiv Mundane sir. Now, let's begin with the Dhanvantari Stava. Good morning to all on this virtual dais. YMT Medical Trust Chairman and our inspiration, our honorable and respected Dr. G.D. Paul sir, today's speakers of the webinar, today's chairpersons, Dr. Dudmal sir, Dr. Jyoti madam, Dr. Subhash Waghe sir, our chairpersons, Dr. Raju Mundane sir, Dr. Vijay Poddar sir, and Dr. Waghe sir. Our respected principal, Dr. Sanjeev Yadav sir, vice principal sir, Dr. Naidanik Sadhanani sir, all the departmental HODs, all faculties of the YMT Medical Ayurvedic College, departmental staff of the Rome Nidan, Dr. Zaikini madam, Dr. Shivani Gupta, Dr. Snehal Patil, Dr. Anil Palaikar sir, and all the participants for the today's webinar. Today, we are here for the inauguration of our national webinar. Our topic is Naidanik Sadhanani, that is Diagnostic Tools 2021, organized by the Rog Nidan Department of YMT Ayurvedic Medical College. As a head of the department, I welcome to all. Our today's topic is on diagnostic tools for the effective treatment of the diseases. It's very important to diagnose the diseases properly. Various methods of the clinical examination of the patient help in the diagnosis of the disease, which is finally confirmed with the different pathological tests and radiological diagnostic tools. So, this topic plays a very important role in the teaching curriculum to the graduates of the medical field, as well as it has a tremendous valuable role in the current medical practice. I am very much happy to share that we had arranged such national webinar last year also in 2019-20. So we hope that today's all lectures will be of great help to all our listeners. Today we have very eminent speakers as well as the senior faculties in Rog Nidan as chairperson. I am very much thankful
to Honorable and respected Dr. G.D. Paul sir, Dr. Sanjeev Yadav sir, and Dr. Naidanik Sadhanani sir for always encouraging and giving us support and inspiration for all our academic activities, which are always helpful for the students. With warm welcome to all, I ask Dr. Snehal to proceed further for today's national webinar. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, I would like to hand over the screen to Dr. Anil Parekar, sir, Assistant Professor in our department, for the introduction of our first speaker, Dr. Arun Dodmal, sir. Anil, sir, over to you. Thank you, Dr. Snell, ma'am. Anil sir, unmute yourself. Anil? Am I audible, sir, right now? Yes, yes. Okay, thank you, sir. Good morning, everyone. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker for the first session today, who is going to talk to us about the importance of Kshatriyakal in diagnosis. Please join me in welcoming home Dr. Arun Dudmal, sir. Sir is Assistant Principal, Associate Professor, and Head of the Department of the Rog Nidan and Vikriti Vigyan at APM's Ayurved College, Sayan, Mumbai. Sir has completed BMS from Government Ayurved College, Usmanabad, Maharashtra, and MD Rog Nidan from Government Ayurved College, Nanded. Sir is a MUHS recognized PhD guide and PhD teacher, having 20 years of teaching experience in field of Ayurveda. Also, Sir is a founder member of National Research Journal, Ayurlok. Sir is also founder member of International Research Journal, Ayurline and IJ Care. Sir is working as a board member in various research journals. Sir has also published various research articles. Also, Sir has published Pioneer of e-books in Ayurveda. Sir has also published various book apps on Google Play Store and Google Books. Sir has also published Rog Nidan Part 2 book, Madhav Nidan, Vikriti Vigyan, Shukravani. Sir has actively participated in various national and international webinars and workshops. Sir is also actively in social works like arranging blood donation camps and free health checkup camps. Sir is also founder member and working president of Rog Nidan Parishad, Ayurveda Teacher Association, and also a member of NEMA. Sir is also working on the university board member as a ex-board of studies member of Mumbai University and also board of studies member of D.Y. Patil University, Navi Mumbai. Sir has also attended examinations at MUHS, Gujarat University, Jamnagar, BHU, and Varanasi. Welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much for such a wonderful introduction. Whether my screen is visible? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. thank you. आज जीडी पॉल फाउंडेशन YMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खारगर नवी मुंबई की तरफ से रोग निदान विभाग के द्वारा नेशनल वेबिनार जो आयोजित किया है, इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आज इस वेबिनार में मुझे षटक्रिया काल के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं माननीय जीडी पॉल फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर जीडी पॉल सर, प्रिंसिपल संजीव यादव सर, वाइस प्रिंसिपल नीना साठे सर तथा रोग निदान डिपार्टमेंट के HOD मैम आशना घारगे मैडम तथा अदर स्टाफ जो है यहाँ पे चाइकिनी मैडम, शिवानी गुप्ता, स्नेहल पाटिल, अनिल पारेकर आदि सभी का यहाँ मैं
धन्यवाद देता हूं। और आज का जो विषय है अपना, उसे मैं विथ परमिशन ऑफ चेयरमैन डॉक्टर सुभाष वाघे जी, मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं, और मैं यहाँ मेरे गुरु भी देख रहा हूँ डॉक्टर विजय पोद्दार सर, इन सभी के परमिशन से आज का षटक्रिया काल का विषय जो मैं यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। आज नैदानिक दृष्टिकोण से षटक्रिया काल का अनन्य साधारण महत्व है। आयुर्वेद की एक विशेषता है, जिस विशेषताओं में हमें देखना चाहिए और हम देखते भी है हमेशा कि कुछ कंसेप्ट जो है खास करके पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से उन्हें हमने बड़े अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक जो है तो अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा, रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि व्याधियों को जब उत्पत्ति की दृष्टिकोण से देखा जाता है, व्याधि की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से आयुर्वेद के विशेषताओं से देखा जाता है, तो आयुर्वेद की विशेषताओं में हमें व्याधि का अभ्यास करने के लिए, व्याधि को समझने के लिए और उसे समझाने के लिए, और व्याधि किस ढंग से शरीर में निर्माण हुआ है, इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें सुश्रुतोक्त षटक्रिया काल का ही आधार लेना पड़ता है। तो बेसिकली षटक्रिया काल जो है तो इसकी व्याख्या इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन ऑफ द षटक्रिया काल। We will learn about the definition of the षटक्रिया काल, types of the षटक्रिया काल, causes of the षटक्रिया काल, symptoms related in the षटक्रिया काल which are developed, relevant examples of the diseases regarding the षटक्रिया काल, and importance in diagnosis of the षटक्रिया काल। ये कुछ टॉपिक हम इस प्रेजेंटेशन में लर्न करेंगे। व्याख्या देखी जाए तो बहुत सिंपल व्याख्या है इसकी, खास करके कहीं व्याख्या भी खास यानी कि निरुक्ति वगैरह जो कहते हैं तो दिखती नहीं, क्योंकि ये संधि 3 शब्दों से बना है, संधि करके इसे देखते तो षट क्रिया काल। इसका विग्रह करेंगे हम तो इसमें 3 शब्द हमें देखने मिलते हैं कि षट है जो संख्या सूचक है, क्रिया जो है तो कुछ हमें एक्टिविटी करने के लिए कहता है, क्रिया जो है तो वो खास करके मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से चिकित्सा सूचक है। यहाँ पे क्रिया शब्द का जो है तो एक्टिविटीज कुछ करनी है उसके लिए रिगार्डिंग क्रिया शब्द आया है। क्रिया ये फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से नहीं आया है। षटक्रिया काल जो है तो इसमें क्रिया शब्द है तो चिकित्सा के अनुषंग से आया है। और काल जो है तो ये एक स्पैन है, विशिष्ट कालावधि, विशिष्ट उस काल में ये लक्षण निर्माण होते हैं, इसके अनुषंग से इसे अवसर सूचक कहा है। दिस इज अपॉर्चुनिटी टू फिजिशियन और सर्जन टू डू समथिंग रिगार्डिंग दैट डिसीज। तो ये इसमें जो है तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरवेंशन करने के लिए, चिकित्सा जो है इंटरवेंशन करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को षटक्रिया काल के माध्यम से डिस्क्राइब किया है। तो ये षटक्रिया काल जो है तो इसकी विशेषता जो है तो हम विशेषता देखते हैं तो षटक्रिया काल का वर्णन हमारे संहिता ग्रंथ जो है इनके अनुषंग से देखा जाएगा तो सिर्फ हमें सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। तो सुश्रुत संहिता जो है तो इसकी कुछ खासियत है, उसमें षटक्रिया काल एक खासियत है और इस खास स्पेशली डिस्क्राइब दिस इन व्रण प्रश्नीय अध्याय। षटक्रिया काल इज डिस्क्राइब्ड इन व्रण प्रश्नीय अध्याय, दैट इज इन सूत्रस्थान ऑफ द सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान में व्रण प्रश्नीय अध्याय है। तो इस अध्याय की खासियत जो है, इस अध्याय का स्पेसिफिकेशन जो है तो और कुछ है, सिर्फ षटक्रिया काल के अनुषंग से ही नहीं है। इसमें आप अगर इस अध्याय को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें एक प्रश्न हमारे आयुर्वेद जनों के लिए हमेशा रहा है कि उस प्रश्न को भी इसी अध्याय में उठाया गया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन इज राइज्ड फ्रॉम सुश्रुता, दैट इज द वेदर फोर्थ दोष। हमारा कंसेप्ट है त्रिदोष सिद्धांत का, लेकिन चौथा दोष जो है जिससे हम रक्त दोष, बहुत बार हम इस शंका पे आते हैं और एक क्वेश्चन हमें हमारे साथ बना रहता है कि रक्त भी कहीं दोष है क्या नहीं, और रक्त दोष है क्या नहीं, इस प्रश्न को उठाया है इसी अध्याय में।
व्रण प्रश्नीय अध्याय में उठाया है। तो इसलिए इस अध्याय का एक षटक्रिया काल के साथ रक्त दोष को समझने का भी यहाँ प्रयास किया है। और उसे कहीं आप देखेंगे, अध्याय को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि संचय में कुछ लक्षण कहे नहीं, लेकिन प्रकोप में लक्षण, रक्त के प्रकोप के लक्षण कहे। इसलिए हमें थोड़ा सा इसे गौर करना चाहिए, क्योंकि षटक्रिया काल का जो वर्णन है वो खास करके वात, पित्त और कफ, इन दोषों के स्थिति के अनुषंग से ही किया गया है। लेकिन साथ में ही इसमें कहीं तो ये वैशिष्ट्य देखने मिलता है कि रक्त के प्रकोप के हेतु, यानी कि साथ में ही कहे गए हैं रक्त दुष्टि के, और साथ में प्रकोप के लक्षण भी वहां पे कहे नहीं है, लेकिन उसका उल्लेख वहां पे किया है। इसलिए रक्त को भी यहाँ षटक्रिया काल के अनुषंग से हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए और उसे भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। रक्त तो यह सर्जरी का एक मेन सब्जेक्ट है कि जिसके रिगार्डिंग हमेशा उसे देखा जाता है। तो इस अनुषंग से देखा जाएगा तो एक श्लोक आता है कि वात पित्त श्लेष्मनाम एवं देह संभव हेतुआ तदेव भीर शोणित चतुर्थे संभव स्थिति प्रलयदिशो। तो इसमें कुछ कहा है कि खास करके कि दोष, चतुर्थ दोष रक्त को कहना संभाव, मतलब कह सकते हैं, इस अनुषंग से प्रश्न उपस्थित किया है। लेकिन उन्होंने उस अध्याय में डिनाय भी किया है, रक्त को दोष माना भी नहीं किया, उसी अध्याय में उन्होंने डिनाय किया है, ये भी हमें स्पष्ट देखने मिलता है। तो ये इस अध्याय की जो खासियत है उससे थोड़ा सा ब्रीफली बोला। हमारा आज का टॉपिक जो है तो षटक्रिया काल, उसे देखते हैं। षटक्रिया काल जो है तो पहले कहा कि यह संख्या सूचक है, इसमें पहले ही संख्या कह दी है कि ये अपने ग्रंथों की खासियत है कि त्रिदोष है, सप्त दो धातु है, इस तरह से पंचमहाभूत है। तो ये संख्या जो है तो काउंटिंग जो है तो इसको अनन्य साधारण हमारे आयुर्वेद में हर जगह पे महत्व दिया है। तो गुणों को भी कहा विशंत्रिय गुण था, इस तरह से हमें काउंटिंग को इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें और कुछ हमें देखने नहीं मिल सकता है। इस दृष्टिकोण से उसे हमें देखना चाहिए कि त्रिदोष ये चौथा दोष मानना नहीं है इस ढंग से हमें, कि अभी षटक्रिया काल के ऊपर और कुछ है क्या, इसके बारे में कहना उचित नहीं है। इसलिए इन्हें इस तरह से संख्या सूचक कहना ये उनकी खासियत रही है आयुर्वेद की। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्ति भेदम च वेति दोषाणाम च भवे विषम। तो इस श्लोक में जो है तो सुश्रुत का इंटरप्रिटेशन इस तरह से कि जो भी भिषक है, जो वैद्य है, जिसे रोग की चिकित्सा करनी है, उसे दूर करना है, तो उसे इन षटक्रिया काल के माध्यम से उसका अध्ययन करके उसे रुग्ण में समझ लेने के बाद ही वो सफलतापूर्वक वो चिकित्सा कर पाएगा। अगर वो इन अवस्थाओं को समझ नहीं पाया तो वो उसकी चिकित्सा व्यर्थ जाएगी। इस उद्देश्य से उसका इस श्लोक का प्रतिपादन है। तो इसलिए संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, इनका महत्व जो है तो वैदिक के डायग्नोसिस में इसी श्लोक में वहां पे प्रतिपादन किया है। इसलिए इन षटक्रिया काल का वैदिक के विनिश्चय में हमेशा हमें ध्यान रखना है, उसे हमें हमेशा याद रखना है कि कौन सी अवस्था में शरीर में दोष यहाँ पे है, और उस दोषों की अवस्थाओं को निश्चित करके ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि डायग्नोसिस पहले करना चाहिए। आप सभी इसका जानते कि निदान का अनन्य साधारण महत्व है। तो इससे कुछ मॉडर्न के पारिभाषिक शब्दों में देखा जाएगा तो एक्युमुलेशन जो अवस्था है दोषों के रिगार्डिंग है, इसलिए ये सभी दोषों के संबंध में कि संचय है, एक्युमुलेशन है, दोषों का प्रकोप होना, उसे एक्साइटेशन कहा जा सकता है। अब प्रसर जो है तो स्प्रेड कहा सकता है, स्थान संचय जिसे कि लोकलाइजेशन कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन जो है तो उसे व्यक्ति कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस षटक्रिया काल को समझना। हम लास्ट का 6ठा नंबर जो है तो भेद, इसे बहुत बार हम किताबों में देखते हैं कि भेद को व्याधि के भेद कहे हैं, लेकिन ये भी धारणा यहाँ हमें अभी बंद करनी चाहिए। खास करके हम बहुत बार स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि व्यक्ति के बाद भेद अवस्था जो आती है वो उस डिसीज के टाइप्स कहे गए।
लेकिन ये नहीं है। इसलिए हमें भेद अवस्था को समझने के लिए, जैसे कि ज्वर व्याधि है, उसके अष्टविध ज्वर कहे हैं, तो ये अष्टविध ज्वर जो है तो वो उसकी भेद अवस्था नहीं है। तो ज्वर के जो उपद्रव है वो भेद अवस्था है। तो इसी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम भेद किसे कैसे टाइप्स, सब टाइप्स जो है डिसीज के, उसे भेद कहा नहीं है। ये भी हमें इस षटक्रिया काल के अनुषंग से हम निदान में पढ़ाते वक्त इस भेद को मोस्टली सब हमने जब पढ़ा हो तभी भी ये भेद मतलब टाइप्स ऑफ डिसीज और बुक्स जितने भी है उसमें भी हम देखते हैं कि भेद को व्याधि के प्रकारों को कहा गया है। तो लेकिन भेद जो है तो असल में उसकी डेफिनेशन जो है तो सुश्रुत में जो आई है भेद में, उसको सिक्वेली या कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव के स्वरूप में उसे डिस्क्राइब किया है, प्रतिपादित किया है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे भेद जो है तो उससे भी हमें देखना है। अब दोषों के अनुषंग से देखा जाएगा तो शरीर में दोषों की अवस्थाएं, दोष अवस्थाएं जो है हमेशा भिन्न रहती है, यानी कि दोष हमेशा शरीर में साम्य स्थिति में रहते नहीं है। तो साम्य अवस्था जो है दोषों में नहीं रहती है, इसे भी हमें देखना चाहिए। और साम्य प्रस्थापित करने के लिए शरीर में हमेशा संघर्ष जो है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए शरीर हमेशा वहां पे प्रयास करता है। तो इसलिए देखा जाएगा तो दोषों में अवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो काल सापेक्ष अवस्था है और हेतु सापेक्ष या व्याधि सापेक्ष दोषों की अवस्था है। तो साम्य अवस्था जो है वो नैसर्गिक है, लेकिन उसमें भी हमें देखने मिलता है कि उसमें भी काल सापेक्ष दृष्टिकोण से या ऋतु के दृष्टिकोण से संचय, प्रकोप और प्रशम अवस्थाएं निर्माण होती रहती है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ फ्लक्चुएशन जो है, जिसे हम फ्लक्चुएशन कहेंगे, उसे यहाँ वो विकृत सूचक नहीं है, ये साम्य सूचक है। फिर भी इन अवस्थाओं को हमें गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं नैसर्गिक या काल सापेक्ष दोषों का जो प्रकोप है उस प्रकोप को कहीं इनिशिएट करने के लिए कुछ और कॉजेस कुछ मिल जाएंगे या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वहां पे मिल जाएंगे, तो वो प्रकोप अवस्था जो है तो प्रशम अवस्था में जाने के बजाय वो कहीं प्रसर अवस्था में चली न जाए। इसलिए नैसर्गिक दोषों की स्थिति जो है वो ते वय और रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात्, इसे दृष्टिकोण से देखना है और उसका कोई पॉजिटिव जिसे हम फैक्टर तो वहां क्रिएट नहीं हो जाता है कि जिसके कारण ये प्रकोप अवस्था कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाती। तो इसलिए नैसर्गिक अवस्थाओं को भी हमें गौर से व्याधियों के दृष्टिकोण से, रुग्ण के दृष्टिकोण से उस नैसर्गिक अवस्था को भी हमें देखना चाहिए, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। वी हैव कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस नेचुरल विशेषण ऑफ द दोष। तो व्याधि कारक जो है तो वो दोष वैषम्य जो है तो हेतुओं के सेवन से, हेतुओं का सेवन अगर सातत्य से रहेगा, हेतु सेवन सातत्य रहेगा, यानी कि कंटिन्यूसली कोई कॉज वहां पे परसिस्ट है और उस परसिस्टेंस कॉज की वजह से वहां पे दोष वैषम्य जो है तो बनता है। और इस दोष वैषम्य को हम रोगस्त दोष वैषम्य कहते हैं कि रोग निर्माण होने की यहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये व्याधि कारक है और ये व्याधि कारक होने के कारण इस व्याधि कारक की सूचकता जो है तो इस वैषम्य को भी, दोषों के वैषम्य को भी हमें बेसिकली दो टाइप्स में देखा जाता है कि हम हमेशा देखते हैं कि क्षय और वृद्धि। दोषों की क्षय होना, दोषों का दोष कम हो जाना या दोष वृद्धि हो जाना। तो वृद्धि जो है तो खास करके नैसर्गिक भी हो सकती है और व्याधि कारक जो हेतुओं के सेवन जो है उनके परिणाम स्वरूप भी हो सकती है। तो ये परिणाम स्वरूप हेतु होने वाली वृद्धि जो है इसे समझने का प्रयास जो है इस षटक्रिया काल के माध्यम से किया है। तो ये संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, ये सभी अवस्थाएं जो है तो ये वृद्धि अवस्था में निर्माण होते हैं। यानी कि दोषों का प्रकोप जो है, दोषों में जो वृद्धि हो जाती है, उन वृद्धि के परिणाम स्वरूप यहाँ पे षटक्रिया काल के दोषों की जो अवस्थाएं हैं वो निर्माण होती है। लेकिन वो निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? हेतु सेवन चाहिए, हेतु का सेवन करना चाहिए, हेतु वहां पे निर्माण होने चाहिए। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे षटक्रिया काल के जो वृद्धि अवस्थाएं हैं वो निर्माण हो सकती है। क्षय के बारे में तो ज्यादा हम यहाँ देखेंगे नहीं, क्योंकि क्षीणा जहति स्वलिंगम समापति, तो इस तरह से
वहां पे क्षीण दोष जो है तो अपने लिंग को हानि करते हैं, उनमें लिंग कम हो जाते हैं, तो उनका यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन दोष जो है वृद्धि अवस्था में जाते हैं तभी वहां पे षट क्रिया काल जो है तो निर्माण हो सकता है। अभी वृद्धि अवस्था जो है तो इसे देखना जाए तो ये हम सभी अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि वृद्धि जो है तो स्वस्थान और अन्य स्थान, इस दृष्टिकोण से इसे भी हमें ग्रंथकार जो है तो सुश्रुत, चरक और अकबर जो बृहद्रय्य है इसके सापेक्ष में हमें देखना पड़ता है कि षटक्रिया काल का वर्णन तो चरक और वाग्भट में नहीं है, लेकिन सुश्रुत में कहा है। इसलिए इन अवस्थाओं को देखा जाएगा तो चरक जो है तो संचय अवस्था जो है तो उसे स्वस्थान वृद्धि कहते हैं, और अन्य स्थान में जो है तो चरक और वाग्भट जो है तो प्रकोप को वहां पे डिफाइन करते हैं। लेकिन सुश्रुत जो है तो वहां पे स्पष्ट है कि उन्होंने स्वस्थान में क्षय और प्रकोप को कहा है, संचय जो है और प्रकोप जो है तो स्वस्थान में कहा है, और अन्य स्थान में यानी कि स्वस्थान जो है तो उसके अपने अपने दोषों के स्थान डिस्क्राइब किए हैं। उन सभी का वर्णन यहाँ इसी वर्ण प्रश्नीय अध्याय में यहाँ पे आया है कि उनके स्थानों को लिखा है, और स्थान से अन्य स्थान में गमन जो है तो उससे ही वहाँ पे ये चार अवस्थाएं वहाँ पे निर्माण होती है। ये तो प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये चार प्रकार की अवस्थाएं जो है तो अन्य स्थान गमन में कही है। लेकिन सुश्रुत का ये षटक्रियाकार है, लेकिन चरक और वाग्भट में नहीं है, इसलिए अन्य स्थान गमन जो है तो प्रकोप में ही आ जाता है। प्रकोप अवस्था ही वहां व्याधि कर कही गई है। तो इस तरह से दोषों को हम बहुत बार कंफ्यूजन रहते हैं, हमारा कंफ्यूजन बना रहता है एक्चुअली। तो हम स्थानों को किस तरह से देखा जाएगा, और स्वस्थान में संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति भेद दोषों के होता है या नहीं है। स्थानों में दोषों के व्याधि हो सकते हैं, जैसे कि वायु का स्थान हृदय है तो हृदय में भी वात के रोग हो सकते हैं। फिर अन्य स्थान गमन कैसा, इस तरह से हमारी शंकाएं हमेशा बनी रहती है। तो इन शंकाओं को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ये शंका जो है हमारी, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेरी जो है वो जायज है या नहीं है। तो देखा जाएगा तो ग्रंथों टेक्सचुअल जो रेफरेंस है, एतानु खलु दोष स्थानानि येषु संचयाते दोषा, तो दोषों के स्थान वहां पे डिस्क्राइब किया है, उन्हीं स्थानों में दोषों का संचय होता है, ऐसा प्रतिपादन ग्रंथ में आया है। इसलिए इसमें कोई ये नहीं है, कुछ व्यू अलग अलग नहीं है कि दोषों का संचय कहाँ पे होता है, ये ग्रंथ टेक्सचुअल में कहाँ है। तो दोषों का संचय जो है तो उनके खुद के स्थानों में भी कहाँ है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि वायु के स्थान कौन से है, पित्त के स्थान कौन से है, और कफ के, इसमें एक खासियत और देखने मिलती है सुश्रुत में कि यहाँ पे पंच स्थान डिस्क्राइब किए हैं, दोषों के पंच स्थान वहां पे डिस्क्राइब किया है। इसका भी कारण है कि वहां पे जो वायु के प्रकार है, पित्त के प्रकार है या कफ के प्रकार है, वो अलग अलग प्रकार वहां पे दिखाई देते हैं, इसलिए उस दृष्टिकोण से उन स्थानों को वहां डिस्क्राइब किया हुआ दिखता है। जैसे कि हृदय में साधक पित्त है, तो नेत्र में आलोचक पित्त है, यकृत में पाचक पित्त है, इस दृष्टिकोण से भी उसे देखना चाहिए। उर स्थान में अवलंबक कफ है, तो इस तरह से, तो इस ढंग से देखा जाएगा तो अलग अलग स्थानों का वर्णन जो है तो वो दोषों के अनुषंग से कहा है, और उनके विशिष्ट या प्रधान स्थान भी वर्णन किए हैं। जैसे कि वायु का गुद स्थान पक्वाशय यहाँ है, ग्रहणी और जिसे पित्त का प्रधान स्थान माना है, अमाशय जो है तो कफ का प्रधान स्थान माना है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा इन स्थानों में, जैसे कि इनिशिएटिंग स्टेज जो है दोषों को संचय इन प्रधान स्थानों से होकर दोष जो है तो इन प्रधान स्थान में रहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, हाउस कह सकते हैं। इन्हें लोकेशन कहने के बजाय इनका हाउस है ये। तो हाउस शब्द जो है तो ये अप्रोप्रिएट मुझे लगता है, क्योंकि हम हाउस में हमारे घर में ही रहते हैं, घर से बाहर भी जाते रहते हैं, फिर हम हमारे किसी विशिष्ट काल में, जैसे कि हमें रात में या हमारा काम होने के बाद हम फिर हमारे घर में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये दोष जो है तो अलग अलग स्थानों में हमेशा परिभ्रमित होते रहते हैं, लेकिन उनको फिर से उनके स्वस्थान में आना ही है, यानी कि उनके
उनके हाउस में आना है। तो इस दृष्टिकोण से हाउस शब्द है जो विशिष्ट स्थानों के लिए हमें अच्छे ढंग से उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन स्थानों से ही दोषों का संचय होता है, इन स्थानों में ही संचय होकर आगे चल के ये दोष जो है तो वो व्याधिकर हो सकते हैं। तो पहली अवस्था जो है तो दोषों के षटक्रिया काल में संचय अवस्था कही है। संचय जो है तो स्वस्थान के दृष्टिकोण से कहा गया क्षय वृद्धि स्वधामनीय हो। हमने देखा कि स्वस्थान किस ढंग से कहे गए तो उन खुद के स्थानों में ही दोषों का बढ़ जाना, वृद्धि यानी कि दोष में वृद्धि वहां पे होती, दोष वहां पे बढ़ जाते, उनके गुणात्मक वृद्धि वहां पे है। दोषों के गुण कहे हैं, हर दोष का अपना अपना प्रॉपर्टीज है, उन गुणों के दृष्टिकोण से वहां पे उनकी वृद्धि हो जाती है, इसे ही हम क्षय कह सकते हैं। तो क्षय जो है तो वो वृद्धि सूचक है। तो इस वृद्धि सूचकता को हम अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो एक्युमुलेशन जो है दोषों का, तो इससे हम अगर टिश्यू लेवल पे देखेंगे तो जब भी कोई टिश्यू के द्वारा कोई प्रतिक्रिया वहाँ पे एंटीजन वगैरह या इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया जो होती तो उस समय टिश्यू में कुछ चेंजेस वहाँ पे बदलाव आ जाते हैं कि वहाँ पे जो है तो आयन एक्सचेंज खास करके हमें देखा जाता है। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज जो है तो वो बढ़ जाता है। तो ये आयन एक्सचेंज की प्रक्रिया जो बढ़ जाना है, इसे ही हम थोड़े से दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो उसे भी हम सहंति स्वरूप वृद्धि जो है तो उसे कह सकते हैं। तो ये वृद्धि जो है दोषों की, वहाँ पे कुछ हलचल वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे शुरुआत हुई है, तो उन्हें हमें संचय के स्वरूप में देखना चाहिए। वहाँ पे दोषों के प्रॉपर्टीज जो है, गुण जो है तो वो बढ़ जाते हैं और उनका उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे कुछ लक्षण वहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। तो प्रदेशो वृद्धि हेतु खास करके हेट प्रदेशो वृद्धि, जिन कारणों से दोषों में वृद्धि हो रही है उन कारणों के प्रति द्वेष होना। जैसे कि उष्ण गुण के कारण वहां पे पित्त का प्रकोप हो रहा है, जैसे कि उष्ण गुण है, पित्त प्रकोप करने वहां पे हो रहा है, तो पित्त को शमन करने के लिए शीत गुणानुभूति या तो उस उष्ण गुण का सेवन करने की इच्छा नहीं होना। जैसे कि हम देखते हैं कि ज्वर व्याधि में, खास करके ज्वर में क्या होता है कि हमें एक बॉडी टेम्परेचर राइज होता है और उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि गर्म पानी हमको पीना चाहिए जो आम पाचक रहता है, लेकिन हम क्या है गर्म पानी पीने की इच्छा नहीं रखते, हमें लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिले। तो ये जो है तो इस तरह से गर्म पानी की इच्छा न होना, ये प्रदेश वृद्धि, और ठंडे पानी की इच्छा होना ये विपरीत गुण इच्छा से। तो इस तरह से हमें कुछ इस संदेश यहाँ पे मिलता है कि ये अवस्थाएं हमें जांचनी चाहिए। संचय की अवस्था एक तो हमारा दुर्भाग्य है कि पेशेंट हमें इस अवस्थाओं में हमारे क्लिनिक में या हमारे ओपीडी में या हमारे हॉस्पिटल में आते नहीं है, लेकिन ये जो है तो ये अवस्थाएं हमें जब पता चलेगी तब इस अनुषंग से तो इसका इम्पोर्टेंस जो है तो ये प्रिवेंटिव ऑफ द डिसीज रिगार्डिंग है। खास करके ये संचय जो अवस्था है ये शस्त्रोक्त का विषय बन जाता है और इसके रिगार्डिंग हमें जन जागृति करनी चाहिए। यहाँ पे जो है तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम हमें क्रिएट करने चाहिए, कुछ मॉडल्स इसमें बनाने चाहिए और ये इसको हमें सोसाइटी में लेके जाना चाहिए कि इस तरह से आपको व्याधि होने के पहले भी कुछ लक्षण वहाँ पे शरीर में दिखाई दे सकते हैं। उन लक्षणों को आप गौर कीजिए और उनके तवज्जो देख के, उनको ध्यान देकर उसको तो निराकर करने का प्रयास कीजिए कि और इस तरह से हमें संचय अवस्था में हम रोक पाएंगे व्याधि को, तो आगे की अवस्थाएं वहाँ पे निर्माण नहीं होगी और व्याधि वहीं पे उसका शमन हो जाएगा। तो यह संचय का इम्पोर्टेंस है। तो संचय को कई प्रकार में तो वहाँ ग्रंथ में लिखा नहीं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से संचय जो है तो एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में, मतलब क्रॉनिक भी रह सकता है और एक्यूट भी रह सकता है। तो एक्यूट कंडीशन जो है तो जैसे शीघ्र स्वरूप में संचय किसी कारण हो सकता है, तो शीघ्र होने के लिए भी बहुत बार दिन दोष अगर रहेंगे शरीर में तो उसके कारण संचय की शीघ्र अवस्थाएं वहाँ पे
बनी रह सकती, बन जा सकती है। तो एक्यूट कंडीशन जो है तो निश्चित तौर पे कुछ कंडीशन शरीर में बनी है जिसे हम लीन डोज हमेशा कहते हैं, तो उस ढंग से एक्यूट कंडीशन या क्रॉनिक, तो धीरे धीरे संचय का अवस्था जो है तो यह हमेशा देखी जाती है जीर्ण स्वरूप के। तो जीर्ण और शीघ्र, इस दृष्टिकोण से संचय को हमें देखना चाहिए। तो संचय के दृष्टिकोण से अलग अलग का दोष, तीनों दोषों के अलग अलग लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। तो दोषों के संचय के लक्षण जो है तो उससे भी हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशन जब हमारा अच्छा रहेगा या पेशेंट अगर ये लक्षण हमें बता रहे हैं कि जो खास करके इसको हम स्टडी करेंगे अच्छी ढंग से, तो हमें इस अवस्था में व्याधि को रोक सकते हैं, इस अवस्था में हम व्याधि को आगे बढ़ना उसका रोक सकते हैं। इसलिए हमें इस संचय के लक्षण जो है तो वायु के, पित्त के, कफ के, इनको देखना चाहिए। तत्र संचितानाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। और दो लक्षण ही यहाँ पे दिए हैं जो वायु के अनुषंग। वायु जो है तो गति सूचक है, गति सूचक है, वायु बढ़ रहा है, फिर भी स्तब्ध लक्षण यहाँ पे आए। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लक्षण है कि स्तब्ध लक्षण जो है तो हम देखते हैं हमेशा कि स्तब्धता जो है तो कफ का स्थिर गुण है, उसके कारण निर्माण होने चाहिए। लेकिन वायु वहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, वो आ रहा है, संचित हो रहा है वहाँ पे, इसके कारण वो आगे जाके वो अलग लक्षण निर्माण, चल गुण से वो अलग लक्षण निर्माण करेगा। लेकिन सो एक्युमुलेट हो रहा है, उसके विशेटिंग पावर वहां पे ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए वो स्तब्ध कर रहा है, तो वहां पे मूवमेंट्स को कम कर रहा है, इसलिए स्तब्धता लक्षण आया है। और वो एक्युमुलेट होने से कारण वहां पे पूर्ण कोष्ठत्व जो है तो वो दिखाई देता है। उस जिस आशय में जाएगा उस आशय में वो आशय भरा हुआ सा महसूस होगा। इस तरह से दृष्टिकोण से देखा जाएगा फुलनेस। इसके कुछ कारण है। हर गुण को हमें गुण सापेक्षता से देखना चाहिए कि किस गुण के कारण वायु का या दोष, किसी दोष का संचय होता है या प्रकोप होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये अष्टांग हृदय के रेफरेंस एक उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचय। वायु का संचय जो है तो उष्ण गुण के साथ, अभी उष्ण गुण जो है तो देखा जाएगा तो वात शामक है, लेकिन वात शामक होकर भी अगर वायु के खुद के प्रॉपर्टीज जो है, जो वायु के विपरीत रहने वाला उष्ण गुण है, उसके साथ अगर वायु के खुद के प्रॉपर्टीज जो रुक्षादि गुण है वो साथ में मिल जाएंगे तो वायु का संचय होना चाहिए। तो वायु का संचय होने के लिए उष्ण गुणों के साथ रुक्षादि गुणों का होना जरूर है, तो उसके परिणाम स्वरूप वायु जो है तो हमें दिखता है कि उसका संचय होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, उसमें वायु का संचय क्या है, उष्ण गुण के साथ वहां पे वृक्षादि भाव वहां पे ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप वायु वहां पे संचित होता है। तो इसके विपरीत है शीतेन कोमम, शीतेन कोपम। तो शीत गुण जो है और उसके साथ के वृक्षादि गुण जो है, तो शीत गुणों के साथ में वृक्षादि गुण या शीत स्वयं भी रहेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पे वायु का प्रकोप हो सकता है। और वायु को शमन करने के लिए उष्ण गुण चाहिए, वायु का संचय करने के लिए भी उष्ण गुण चाहिए, और वायु का शमन करने के लिए भी उष्ण गुण चाहिए। उष्ण यहाँ पे एक मेन की रोल प्ले करता है वायु के विशेषण में। तो क्षम स्निग्धादि गुणों, तो विपरीत गुणों के साथ, विपरीत गुणों के साथ, वायु के विपरीत गुणों के साथ उष्ण गुण रहेगा तो ही वायु का क्षमण हो पाएगा। तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हम हमेशा ही सब को प्रेजेंट करते हैं आमवाद का, जो आमवाद में हम देखते हैं कि शीत गुण के साथ स्निग्धादि द्रव्यों का अगर उपयोग करेंगे या उष्ण गुण के साथ स्निग्धादि द्रव्यों का उपयोग करेंगे, इस दृष्टिकोण से उपशमन उपशय में आमवाद हम हमेशा देते रहते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्तब्धता जो है तो अलग अलग जहाँ भी मूवमेंट है, जहाँ भी मोशन है, उन सभी कंडीशंस में वहाँ पे स्तब्धता दिखाई देती है। तो वायु का संचय हुआ तो जो भी एक्टिविटीज हमारी है, जॉइंट्स मूवमेंट रहेंगे, आईज रहेंगे, आई बॉल्स के रहेंगे, आई लिड्स से रहेंगे, इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स रहेंगे, या सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, माइंड के भी कुछ जो हमारे
सोचने की जो गतिविधियां रहती है उसके भी मूवमेंट्स हैं, और सिक्रेशंस जो भी है, तो ये सभी में भी हमें वहाँ पे वायु के कारण वहाँ पे स्टैग्नेशन, जिसे कि वो मूवमेंट स्टॉप हो गए, इस अवस्था को हमें सिर्फ लोकोमोटर सिस्टम ही नहीं, अलग अलग सिस्टम में भी इसका परिणाम हमें देखना चाहिए। और स्तब्धता वात दोष के कारण है या कफ के कारण है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसे डिफरेंशिएट करने के लिए आगे ना हमें हेतु जो है और कौन से हेतु से वहां पे दोष का प्रकोप हो रहा है वो देखना है। साथ में दूसरा लक्षण जो है तो पूर्ण कोष्ठत्व, फुलनेस जो है तो एब्डोमेन है, स्टमक है, बाउल है, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, ये सेल्यूलर फुलनेस जो है तो उसे भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्रण प्रश्न अध्याय जो है तो कहीं इन्फ्लेमेशन के रिगार्डिंग कहा गया है, व्रण जो है तो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे लास्ट वाला श्लोक, तो उसको भेद में व्रण को ही कर दिया है, उदाहरण के तौर पे वहाँ पे व्रण को ही कहा है, और अतिसार वगैरह का भी वहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन व्रण को ही वहाँ पे कहा है बेसिकली। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन के आगे रिगार्डिंग भी हमें थोड़ा सा ये षटक्रिया काल समझने का प्रयास करना चाहिए। सेल्यूलर फुलनेस जो है तो वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सुडेट्स या जो भी है, तो उसके कारण जो ट्यूमर कंडीशन, जो स्वेलिंग कंडीशन जो है तो बनी रहती है, तो उसे भी हमें देखना चाहिए। और लॉस ऑफ फंक्शन ये भी हमें दिखता है कि 4R के साथ लॉस ऑफ फंक्शन, ये भी वन सिम्टम वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो इसे भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। नेक्स्ट जो है तो दोषों के दृष्टिकोण से पित्त दोष का संचय, क्योंकि गुण जो है तो दोषों के अलग अलग है, और उस गुणों के परिणाम वहां पे दिखता है कि दोषों का संचय वहां पे पड़ता है। तो पित्त दोष है, कफ दोष है या वायु का है, तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है, या दोषों का वहां पे डिफ्रेंशिएशन होगा तो ही आगे हम इसकी चिकित्सा उस ढंग से कर पाएंगे। पिता भाषता मंदोष्मता चांगारा, तो ये सिंपल से उदाहरण हमें खास करके देखने मिलते हैं। हम हमेशा इसको कामला के दृष्टिकोण से देखते कि पिता भाषता निर्माण होती, मंदोष्मता जो है तो ज्वर का अनुषंग से देखा जा सकता है। तो ये जो लक्षण है निर्माण होने वाले संचय के पित्त के, वो भी उसके गुण के परिणाम स्वरूप वहां पे शीत गुण जो है वो अनुबंधित रहेगा तो पित्त का संचय हो जाता है। शीतेन एकता तीक्ष्णा दयाच पित्त से गुरुवती, तो पित्त का चयस जो है तो शीत गुण के साथ, खास करके पित्त के खुद के प्रॉपर्टीज और शीत गुण, वहां पे शीत जो है तो पित्त के अगेंस्ट वाला है। तो हमने देखा कि वायु में भी देखा कि वहां पे उष्ण गुण है, उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। तो ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले दो गुण है, उष्ण गुण वात में आ जाता है और पित्त में तीक्ष्ण गुण आ जाता है। तो कफ में ऐसा नहीं होता, कफ में थोड़ा सा अलग बन जाता है। तो वो जो है तो शीत गुण के साथ तीक्ष्णादि पित्त के गुण जब आ जाते हैं तो वहां पित्त का संचय हो जाता है। और इसके कोपम के बारे में उष्णेन कोपम मंदात्या, तो वो उसके खुद के सभी प्रॉपर्टीज वहां पे रहेंगी हेतुओं में, तो उसका प्रकोप होना वह स्वाभाविक है। समम शीतोपसंहिता, और शीत यहाँ फिर से उसके अगेंस्ट जो भी गुण है पित्त के, वो उसके साथ शीत गुण रहेगा तो उसका शमन हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है तो हमें क्लासिकल एग्जाम्पल जो है तो कामला और जर व्याधि में दिखाई देता है। कफ के संचय के लक्षण देखेंगे तो गौरवम आलस्य, ये दो ही लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं कि गौरवम आलस्य, तो गौरव शरीर गौरव जो है तो वहां पे दिखाई देता है, और आलस्य जो है तो वहां पे प्रक्रिया जो है, क्रिया जो है तो उनमें कमी आ जाती है। इस दृष्टिकोण से हमें देखना है। तो संचय करने के लिए शीते ने युक्ता स्निग्धाध्याय करो। अभी यहाँ पे मैंने पहले कहा कफ जो है तो उसके गुणों से ही वहां पे संचित हो जाता है, शीत गुण भी उसका ही है। वायु और पित्त के बारे में देखा जाएगा तो उसके अगेंस्ट वाले गुण वहां पे उसको संचय करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, लेकिन कफ में ऐसा नहीं है। कफ के खुद के गुण जो है शीते युक्ता स्निग्धाचार्य कुरुते श्लेष्मणाचयम, शीत गुण जो है कफ का ही है, और स्निग्धादि गुण कफ का ही है, वो सभी गुण कफ के होके, लेकिन स्पेसिफिकली शीत गुण के साथ ही
वहाँ पे कफ का संचय होता है, जिसे हम देखते हैं कि उसमें शीत गुण के साथ खास करके उसका संचय जो है तो दिखता है। लेकिन प्रकोप के लिए थोड़ा सा और ट्विस्ट आ जाता है। प्रकोप में देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि उष्ण कोप, अब ये प्रकोप करने के लिए कफ का विपरीत गुण वहां पे काम कर रहा है। शीत गुण के विपरीत गुण, कफ का खुद का उष्ण गुण नहीं है, लेकिन वो प्रकोप करने के लिए वहां पे बाध्य कर, प्रकोप वहां उसको उष्ण गुण ने उसका शमन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उष्ण गुण के साथ कफ के खुद के गुण रहेंगे तो उसका प्रकोप हो जाता है। तो तेने गुणा रुक्षाध्याय क्षम, और उसके खुद के गुण के अगेंस्ट में सभी गुण रहेंगे तो रुक्षादि गुण रहेंगे तो ये शमन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाएगा तो उष्ण गुण जो है कफ को, क्योंकि कफ जो है तो सांद्र प्रदान है, वो स्निग्ध है, वो गुरु है, सांद्र है, और उसका विलयन हो जाता है उष्ण गुण ने। वहां पे हम वसंत में देखते थे, वसंत ऋतु में गुण, वसंत ऋतु में वहां पे कफ का विलयन होता है, उसके परिणाम स्वरूप वहां पे कफ का प्रकोप हो जाता है। इसलिए उष्ण गुण जो है तो उसके अगेंस्ट वाला ही उसको प्रकोप करने के लिए बाध्य करता है। तो इसका उदाहरण घृत जो है तो उसे देख सकते हैं हम। घृत पित्त शामक है, लेकिन कफ को समझने के लिए हमें घृत का उदाहरण अच्छी तरह से हम देते हैं और उसे समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज जो है तो प्रकोप अवस्था, छठ क्रियाकाल का दूसरा क्रियाकाल जो है तो क्रियाकाल को हमेशा वहाँ पे सुश्रुत संहिता में देखे लिखा है कि वो संधीय का अवसर है, वहाँ पे प्रदान करता है तो चिकित्सक को चिकित्सा करने के दृष्टिकोण से। तो कोपस्तु उन्मार्गामिता, अभी संचय तो वृद्धि सौदाम्य हो इस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन कोप के बारे में हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि कोप, क्योंकि हम संचय ही वृद्धि सौदाम्य हो समझ नहीं पाते, और कोपस्तु उन्मार्गामिता किस ढंग से समझ पाए। तो कोपस्तु उन्मार्गामिता, उन्मार्ग गमन मतलब वहां पे जो उसके जो मार्ग है, उसके संचरण के जो भी मार्ग है उन मार्गों से हट जाना, इस दृष्टिकोण से हमें प्रकोप को देखना है। प्रकोप जो है तो उसके स्थान से गमन, दूसरे अन्य स्थान में गमन, उसके स्थान क्या है, स्वस्थान तो है ही, लेकिन उसके संचरण की खुद के भी स्थान है, उन संचरण स्थानों से भी वो हटकर दूसरे स्थानों में जा जाता है, निकल जाता है, तो उसे हम उन्मार्ग गमन कह सकते हैं। उसका मार्ग विचलित हो जाना है, वो अलग मार्ग में चला जाना, तो उसके जो भी स्रोत है उसके अनुगामिता उसके उसी में रहनी चाहिए, उस स्रोत से हटकर वो अगर अलग दिशा में जाएगा वो उन्मार्गमन, वो विरुद्ध दिशा में जा सकता है। उसको जो उसके डायरेक्शन है वेक्टर टाइप में देखा जाएगा तो उसकी जो सिंगल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाएगा, या उससे किसी ने अवरोध किया, अवरोध रहेगा तो वो अपनी दिशा भी बदल सकता है। उस दृष्टिकोण से उन्मार्गामिता जो है तो एक ही दिशा में अधिक आगे चला जाना, लेकिन उसका जो है उसका दिशा जो है लोकेशन जो है तो चेंज हो जाता है। इसमें बेसिकली हमें देखना है कि उसका हाउस जो है और उसके हाउस के जो भी उसके रेगुलर जो उसके जो वेज है वो बदल जाते हैं और अलग वे में वो निकल जाता है, तो उसे ही उन्मार्ग का कहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप उसके जो स्थान है वो बदल जाते हैं और उसके परिणाम से वहाँ पे लक्षण वहाँ पे निर्माण हो सकते हैं। इन लक्षणों को देखा जाएगा तो तेषा प्रकोपात कोष्ठ चरणम, तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो वेसल्स है वेस्कुलर, इसमें प्लाज्मा दिखा है, थोड़ा सा इसको मैं प्रेजेंट करने के थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो इसमें जो है तो ये जो है फ्लूइड जो है जो वेसल्स में है या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो अपने अपने स्थान पे ही है, और किसी कारण पे वहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है या कोई पैथोजन आ जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है यहाँ की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, और ये फ्लूइड जो है तो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पे बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर हो जाता है। तो इस तरह से उनके अपने खुद के जो प्रवाह है, उनके जो वेज है वो बदल जाते हैं, इसी को हम उन्मार्ग गमन कह सकते हैं। और वाटर शिफ्ट बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स कंपार्टमेंट, तो ये कंपार्टमेंट में ही अपने कंपार्टमेंट में काम रहना, अपने ही परिक्षेत्र में काम रह करना चाहिए, तो वो परिक्षेत्र बदल जाना, इसे हम उन्मार्ग गमन कह सकते हैं, क्योंकि उसका स्वस्थान जो है तो निकल जाता है और दूसरे स्थान में जाके वो लक्षण वहाँ पे पैदा करता है।
तो संचय प्रकोप के अनुषंग से दो प्रकार यहाँ बहुत बार हमें सुनाई देते हैं, हम देखते भी है। तो ये प्रकार जो है तो चय पूर्वक और अचय पूर्वक, चय पूर्वक और अचय पूर्वक संचयादि अवस्था जो है ग्रंथ में कही है। तो संचय होके उसका प्रकोप अवस्था नेक्स्ट आ जाना है, उसे चय प्रकोप कहा है। बहुत बार क्या होता है कि ये स्पैन जो है संचय का बहुत कम रहता है या उस होता ही नहीं है, जैसे कि इंजुरी हुए, ट्रॉमा हुआ है, आघात हुआ है। तो ये ऐसे आघात आदि अवस्थाओं में संचय जो है तो अचय पूर्वक होता है, मतलब प्रकोप जो है सॉरी वो अचय पूर्वक होता है। वहां पे चय अवस्था वहां पे नहीं होती, सापेक्षता में वो दृष्टिगोचर नहीं होती, और चय होने के बजाय अचय पूर्वक वहां पे प्रकोप जो है तो दिखाई देता है। तो इस तरह से संचय जो है तो एक्यूट और क्रॉनिक प्रकार में हम देख सकते हैं, और प्रकोप भी हमें क्षय पूर्वक और अचय पूर्वक दो प्रकार में हमें दिखाई दे सकता है। तेषाम प्रकोपात कोष्ठ तोद संचरण, ये वायु के लक्षण है। तो वायु के प्रकोप के अनुषंग से देखा जाएगा तो बहुत सारे हेतुओं का वर्णन वहां पे दिखाई देता है। तो ऊर्ध्व प्रकोपान, अभी ये जो रेफरेंस आप सभी जानते हैं, तो इसे ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बलवत विग्रहात, अति व्यायामात, व्यवायात, अध्ययन, प्रपतन, प्रधावन, प्रपीडन, लंघन, प्लवंतरण, रात्रि जागरण, ये सभी हेतु को यहाँ सुश्रुत ने प्रतिपादित किया है। तो दोषों के हेतु, क्योंकि इस वर्ण प्रश्नीय अध्याय जो है तो इसमें प्रतिपादन विषय जो है तो दोष ही है खास करके, और साथ में रक्त है, और उसमें जो अवस्थाएं निर्माण होने वाली है वो उनको अवस्थाओं को षटक्रिया काल में वहां पे निबद्ध किया है। और ये अवस्थाएं कब क्यों निर्माण हो सकती है, इसके कॉजेस क्या है, तो इस दृष्टिकोण से संचय में कुछ जो है तो हम देखते हैं कि कॉजेस निर्माण हो सकते हैं, लेकिन प्रकोप के लिए खास करके कंसिस्टेंसी जो है हेतुओं में रहनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से वात प्रकोप, पित्त प्रकोप और कफ प्रकोप के कारण जो है तो हमें देखने मिलते हैं। तो ये सभी कारण ग्रंथोक्त है, इसके बारे में ज्यादा होगा। लेकिन काल जो है तो उसके सापेक्ष में हमें डायग्नोसिस के दृष्टिकोण से उसका वर्णन जो है तो उसे हमें देखना चाहिए, और उससे किस ढंग से हमें ट्रीटमेंट करते वक्त या डायग्नोसिस करते वक्त उसका प्रयोग करना चाहिए, हमें गौर से देखना चाहिए। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो काल कहीं परिणाम करता है कि नहीं। तो काल जो है तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पे वहां पे काम करता है। तो शीताब्र वातेषु घर्मांतेच विशेषता प्रतिशपराण्य तु जीर्णान्य च प्रकोपित है। वात प्रकोप काल जो है तो ये कहे हैं, तो इस कालावधि में कुछ शरीर में निर्माण हुई है व्याधियां या निर्माण होने वाले व्याधियां वहां पे एग्रीवेट होते हैं या बढ़ जाती है क्या नहीं, या उन लक्षणों में वृद्धि होती है या नहीं है। अभी हम ना किसका क्लासिकल एग्जाम्पल हमेशा स्टूडेंट को देते हैं, तो वो श्वास का आमवात, त्वचा विकार, मूत्राशमरी ज्वर आदि व्याधि जो है तो इनमें इन विशिष्ट कालावधियों में किसी किसी का व्याधि में अलग अलग रहेगा, लेकिन इस कालावधि में व्याधि का वहाँ पे एग्रीवेशन, मैनिफेस्टेशन, डिसीज के जो सिम्टम हो वहाँ पे बढ़ जाना, यानी कि दोष जो है तो वहाँ पे प्रकोपित हो जाते हैं, और उनके कारण जो लक्षण निर्माण होने वाले हैं वो लक्षण वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि श्वास व्याधि जो है तो वेगावस्था जो है तो खास करके देखी जाती है कि वहाँ पे आभ्र काल में, आभ्र काल में या वर्षा ऋतु में, इन अवस्थाओं में जो खास करके वातज विकार जो है तो वो बढ़ जाते हैं। आमवात को भी देखते हैं कि वो भी किसी अवस्था में सुबह सुबह में प्रतिश अवस्था में भरान्य, तो इन अवस्थाओं में बढ़ता है, वहाँ के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से त्वचा विकार भी खास करके वर्षा ऋतु आदि में भी वहाँ पे उनके लक्षण वहाँ पे दिखाई देते, खास करके सोरियासिस जैसे डिसीज में भी हमें लक्षण जो है तो बढ़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मूत्राशय में भी देखते हैं कि खास करके लेट नाइट पेन जो है तो पात की कालावधि में भी वहाँ पे पेन जो है तो वहाँ पे निर्माण होता है अपान काल में। तो इस तरह से अलग अलग व्याधियों में ये काल जो है तो परिणाम करता है दोषों के प्रकोप की दृष्टि से। वात दोष के अनुषंग से प्रकोपक लक्षण जो है तो सभी लक्षण हम हमेशा ही स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं। संस्र व्यास वेद स्वापसाद रुकतोद भेदनम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण दर्शनम कंप पारुष्य शोषिर्य शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषाय रस्ता
वर्ण शाव अरुणो अपीवा। तो ये जो है तो ये अलग अलग व्याधियों में इन विकृतियों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके रिगार्डिंग ये मॉडर्न के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि ये लक्षण जैसे कि टोसिस लक्षण है, ब्लेप्रोटोसिस संस्र है, हाँ, तो इस तरह से अलग अलग डायलिटेशन है, वेसल डायलिटेशन है, कार्डियक डायलिटेशन है, वेद जैसी पीड़ा है, फंक्शन पेन है, स्वाप जो है, नमनेस है। तो ये अलग अलग लक्षण जो है तो अलग अलग व्याधियों में ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें इन लक्षणों को देखकर हमें व्याधि की विनिश्चिति करनी चाहिए कि ये वात प्रधान विकार है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, सोशरी है, तो वहां पे हमें पता चलता है कि ये वात प्रधान विकार। त्वचा में रुक्षता आ जाती है, रफनेस है, पारुष्य है, तो उसे हम देखते हैं कि उसे हम वात से वहां पे उसको कोरिलेट करना चाहिए कि वात प्रकोप शरीर में है। तो इस तरह से ये अलग अलग लक्षण जो है तो उनके परिणाम स्वरूप यहाँ पे वात प्रकोप के परिणाम स्वरूप ये लक्षण जो है तो निर्माण होते हैं। ये वात प्राधान्यता जो है तो ये हमें देखने मिलती है। तो वायु के रिगार्डिंग जो है तो ये क्लिनिकल अलग अलग सिम्टम्स तो हमें अलग अलग व्याधियों में निर्माण होते दिखाई देते हैं, लेकिन ये दो सिम्टम्स हमेशा याद रखने चाहिए हमें, खास करके कषाय रस्ता जो हमारे मुख की टेस्ट है, जो हमें मुख में जो है तो कषाय रस्ता रहेगी तो हमें डेफिनेटली वात प्रकोप है। हम पेशेंट को हमेशा पूछना चाहिए कि आप मुख का स्वाद कैसा है, तो कशीला स्वाद है तो कषाय रस्ता है तो वायु प्रधान है, तिक्त स्वाद है तो पित्त प्रधान है, मधुर स्वाद है तो कफ प्रधान है। तो इससे हमें इंस्टेंटली डायग्नोसिस जो है तो मिल जाता है कि कौन सा दोष प्रधान वहाँ पे दिखाई देता है। वर्ण विकृतियों को भी देखना चाहिए। क्षाव अरुण वर्ण जो है तो वहाँ पे त्वचा है या मल मूत्र स्वेद आदि जो घटक है उन घटकों में वहाँ पे वर्ण प्राधान्य विकृति कौन सी है, वर्ण प्रधानता कौन सी है, वो भी हमें देखना चाहिए। पित्त के दृष्टिकोण से देखा जाए, पित्त से अम्लिका पिपासा परिदा, ये तीन लक्षण वहाँ पे प्रकोप के रिगार्डिंग सुश्रुत ने कहे हैं, लेकिन वाग्भट ने और सारे लक्षण दिए हैं। रिगर्जिटेशन, थर्स्ट और सीवियर परिदाह जो है तो उसे दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक तो ज्यादा सीवियर बर्निंग है या ऑल ओवर बॉडी बर्निंग। तो परिदाह जो है तो लोकलाइज रहेगा तो वहाँ पे सीवियर बर्निंग वहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि संचय की बर्निंग से थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए इसे परिदाह शब्द परिशब्द वहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये कुछ हेतु वहाँ पे ग्रंथ में आए तो उनके रिगार्डिंग क्रोध, शोक, भय, उपवास, विदग्ध, मैथुन वगैरह वगैरह, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम जा रहा है। तो पित्त प्रकोप जो है तो उसमें कालावधि को भी हमें व्याधि के विनिश्चय के दृष्टिकोण से देखना है कि हमारा षटक्रिया काल का और डायग्नोसिस का जो संबंध है उस रिगार्डिंग हमें प्रकोपक काल कौन से है और काल पित्त के है क्या नहीं। तदुरुष्ण रुष्णे काल्याचे धर्मांतची विशेषता मध्यान्ह अर्धरात्रीचे जीयंते अन्न कृते। तो ये मध्यान्ह है, रात्र में है, या जीर्ण अन्न के जरण के समय में है, उष्ण काल में है। तो इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए कि कौन से ऋतु में है, शरद ऋतु में है। तो इस तरह से वहां पे वो एग्रीवेटिंग कर रहे हैं कि नहीं कॉजेस, और उसके रिगार्डिंग हमें देखना चाहिए कि अम्ल पित्त, शीत पित्त, त्वचा विकार, सूर्य, बहुत सारे विकार जो पित्त विकार है वो सभी वहाँ पे इन कालावधि में एग्रीवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इससे भी देखना है कि पित्त प्रकोप के काल के अनुषंग से वो व्याधि है, तो वहाँ पे हमें पित्त की दृष्टि, वहाँ पे पित्त प्रधान व्याधि की दृष्टि या पित्त की दृष्टि वहाँ पे समझ में आ सकती है। कफ पित्त प्रकोप के लक्षण जो है तो पित्त से दाह, राग, उष्म पाकिता, स्वेदा, क्लेदा, श्रुति, कोथा, सदनम, मूर्छनम, मदा, कटुकाम्ल, रसो, वर्ण, पांडुर, अरुण वर्णिका। तो ये सभी लक्षण जो है तो बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, फीवर, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, क्लेद जो है तो वो सपुरेशन के दृष्टिकोण से उसे देखना चाहिए। क्लेद आयुर्वेद में कहा है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है तो पित्त के कारण जो क्लेद हो रहा है वो पूय फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्रुति जो तो सिक्रेशन जो है, बॉडी सिक्रेशन जो है, खास करके इन्फ्लेमेशन की अवस्था में जो सिक्रेशन बाहर आ जाते हैं, और नेक्रोसिस जो है कोथ के दृष्टिकोण से कोथ को कोरिलेट कर सकते हैं, और अंगसाद, मूर्छा, मद, कटुकाम्ल रस, वर्ण, पांडु, अरुण वर्चिता।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटुकाम्ल का जो है तो मुखास्यता जो है तो कटु अम्ल रस की रहेगी। और वर्ण विकृति में कहा है कि पांडु और अरुण वर्ण वर्जित। वर्जित मतलब कि पित्त के अनेक नाना वर्ण कहे हैं, लेकिन श्वेत वर्ण जो है तो कफ का है और अरुण वर्ण जो है तो वायु का है। ये दो वर्ण छोड़ के बाकी सभी वर्ण विकृतियां जो है तो पित्त के कारण निर्माण होती है। इसलिए पित्त के कारण निर्माण होने वाली विकृत वर्ण विकृतियां श्वेत वर्ण छोड़ के और अरुण वर्ण जो है तो वायु का है उसे छोड़ के सभी विकृतियां पित्त की कही गई है। अन्न इसके प्रकोपक लक्षण जो है अन्न द्वेष हृदय क्लेदश जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकाल। तो ये जो है तो सेकंड स्टेज है षट क्रियाकाल की। इसमें एनोरेक्सिया नौसिया जैसे पित्त दृष्टि लक्षण वहां पे कहे। सॉरी, ये कफ के रिगार्डिंग है। अन्न द्वेष हृदय क्लेदश जायन्ते, तो कफ के दो लक्षण, दो मुख्य लक्षण यहाँ पे। एनोरेक्सिया कफ का प्रकोप जो है तो खास करके स्वस्थान से वो आमाशय समुद्भव जो है तो खास करके कहा है। इसलिए लक्षण जो है तो अन्न द्वेष और हृदय क्लेति, इस दो लक्षण जो है तो आमाशय सापेक्ष वहां पे दिखाई देते हैं। तो ये कुछ कफ प्रकोपक हेतु है, दिवा स्वप्न वगैरह, तो इसको छोड़ते हैं। शीत शीत काले च वसंते च विशेषता पूर्वाण्य च प्रदेश भुक्त मात्रे। तो इन कालावधि में खास करके दो कफ प्रकोप है क्या नहीं है देखना है। वसंत ऋतु है, जैसे कि श्वास का आदि विकार जो है तो वसंत ऋतु में बढ़ रहे हैं, या सुबह सुबह में भी आमवाद जो है तो उसके लक्षण बढ़ रहे हैं, या खाना खाने के तुरंत वहाँ पे लक्षण निर्माण हो रहे हैं। तो ये सभी लक्षण निर्माण हो रहे हैं, उसमें उस दोष की स्थिति को हमें बताते हैं कि कफ दोष वहाँ पे प्रकोपित है। इसलिए काल का अनन्य साधारण होता है कि किस काल में वो लक्षण एग्रेट हो रहे हैं या व्याधि बढ़ रहा है। श्लेष्मा स्नेह काठिन्य कंडु शीतत्व गौरव मंदोपलेप सैमित्य शोप अपक्त्य अति निद्रा। तो ये, और उसमें वर्ण श्वेत रस साधु लवण चिरकारिता। तो ये कुछ लक्षण जो प्रकोप के कफ के है। तो इसमें स्नेह भाव जो है तो ज्यादा शरीर में बढ़ता है, काठिन्य स्टिफनेस जो है तो वहाँ पे बढ़ती है। तो ये जो है स्थिर गुण आदि भाव के कारण वहाँ पे दिखाई देता है। कंडु है, शीतत्व है, गौरव है, हेवीनेस है, बंद है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। उपलेप जो है, स्तिमित एक अलग कफ का लक्षण आ जाता है कि जिसे हम स्तिमित और स्तिमित दो अलग लक्षण है। स्तिमित जो है तो स्तब्धता से है, और स्तिमित जो है तो गीला कपड़ा हमारे शरीर के ऊपर लपेटा हुआ है, इस तरह से चिपचिपापन शरीर में जो बनता है तो उसे स्तिमित के तौर पे कहा गया है। तो शोप, अपक्ति, अति निद्रता, हाइपरसोनिया, ऐसे लक्षण जो है तो निर्माण होते हैं। खास करके वर्ण विकृति जो है तो श्वेत प्रदान मतलब नेत्र, नख, त्वचा आदि भाव शरीर के जो कहे हैं, इन सभी में वर्ण जो है तो श्वेत निर्माण हो जाए तो उसे हमें कफ की दृष्टिकोण से देखना है। रसो स्वादुर लवण, तो मधुर भाव अधिक प्रमाण में निर्माण हो रहे हैं, और साथ में लवण रस, ये दो टेस्ट मधुर और लवण रस की टेस्ट जब मुख में निर्माण हो जाती तो उसे हमें कफ की दृष्टिकोण से देखना है, कफ दृष्टि के दृष्टिकोण से देखना है। और क्रॉनिसिटी जो है तो चिरकारिता जो है तो कफ का मुख्य लक्षण है। प्रकोप के बाद प्रसर अवस्था वहां पे निर्माण होता है। प्रसर अवस्था होने के लिए भी वहां पे हेतुओं का सातत्य वहां बना रहना चाहिए। इसलिए संचेरे उपरता दोषा लभंति न उत्तरागत। अगर इन अवस्थाओं को अच्छी ढंग से समझ लिया और उन्हें वहीं पे कंट्रोल किया, उसे उसका उपचार जो है संचय प्रकोप अवस्थाओं में किए गए तो आगे की गति जो है तो निर्माण नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे हितु सातत्य बनेगा तो तरह गति से भवंती बल होता है, तो वहाँ पे दोषों में गति जो है तो बलवान हो जाएगी और दोष वहाँ पे प्रसर अवस्था में वहाँ पे निर्माण हो जाएगी। तो प्रसर अवस्था जो है तो वो प्रकोप के बाद निर्माण होने वाली है, लेकिन हेतुओं का सातत्य वहाँ पे बना रहना चाहिए। यौम प्रकोपितानाम प्रसरताम वायु विमान गमन आटक, वायु के कारण निर्माण होने वाले अभी विमान गमन हो गया है, तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे वायु के लक्षण जो है तो वहाँ पे वो
आटोपादी लक्षण जो है तो अन्य स्थान में जा रहा है, वहां पे लक्षण निर्माण कर रहा है, तो इस दृष्टिकोण से देखना है। पित्तम ओषोष परिदाह, अभी परिदाह शब्द फिर से आया है, प्रकोप में भी है और प्रसर में भी है, लेकिन यहाँ पे साथ में कुछ पित्त के और लक्षण ओषोष जैसे धुमाएं जैसे लक्षण वहां पे निर्माण कर सार्वधिक तौर पे वहां पे जा रहा है। और कप के दृष्टिकोण से देखा अरोचक अविपाक अंग साध छर्दी श्रेष्ठो लिंग है, तो ये भी अभी यहाँ पे अरोचक अविपाक के साथ अंग साथ भी लक्षण आया और छर्दी एक लक्षण आ गया, तो आमाशय से वहां पे दोष बाहर जा रहे हैं। प्रसर अवस्था में दोषों का वहां पे बाहर जाना, उसके आशय छोड़ कर चले जाना, इसको दर्शाने के लिए छर्दी एक लक्षण यहाँ पे आया कि वो आमाशय से आगे चलते हैं, छर्दी स्वरूप में, मतलब दोषों का वहां पे अपना आशय उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है, तो ये प्रसर अवस्था है। नेक्स्ट स्टेज जो है तो स्थान संशय, स्थान संशय की अवस्था में वहां पे हमें लक्षण जो है तो हम सभी जानते हैं कि स्थान संशय अवस्था जो है तो हमें पूर्व रूप व्याधि के पूर्व रूप को दर्शाती है, तो इस दृष्टिकोण से अत ऊर्ध्वम स्थान संशय वक्षणा यौम प्रकृति स्थास्थाम शरीर प्रदेशां गम्य स्थास्थाम व्याधि न देता। अब जिस स्थान में दोष जो है तो प्रसर होके जाएंगे और जिस शरीर के प्रदेश में मतलब अवयव में या किसी ऑर्गन में जहाँ जाके इम्बेड हो जाएंगे वहां पे वो स्थान व्याधि नहीं देती, वहां जाके वो स्थान संश्रय करके वहां पे व्याधि निर्माण करने वाले। तो इसके उदाहरण कुछ है यहाँ पे जिसे हम सभी जानते हैं कि उदरम सन्निवेशम कुर्वन्ति तदा गुलम, उदर स्थान में जाएंगे तो उदर व्याधि गुल्म व्याधि निर्माण करेंगे, विद्रोधी उदराग्नि मांद्य अंग साध आना विशेषका सापोपति, तो उदर स्थान में दोष जाएंगे, तो यहाँ पे दोषों का जाना जैसे कि अभी उदर स्थान में है तो पित्त की दृष्टि भी हो सकती है, वायु की हो सकती है और कफ की भी हो सकती है। विद्रोधी है तो इसे हम देखेंगे तो कफ की वायु पित्त की दृष्टि से भी हो सकता है। तो इस तरह से यंती बस्तिगत विकारों में प्रमेह अश्मरी मूत्राघात मूत्र दोष होते हैं, तो प्रमेह मूत्राघात मूत्राश्मरी मूत्र दोष, मुझे लगता है 40 कुछ प्रकार के मूत्र दोष कहे गए हैं, ये प्रमेह और मूत्राघात इनको भी वहां पे समाविष्ट किया है मूत्र दोष में। तो इस तरह से मूत्र के विकार जो है तो बस्ती की दृष्टि से हो जाते हैं, बस्तीगत तो अगर दोष जाते हैं तो मूत्र के विकार वहां पे निर्माण। मेड्रगता निरुद्ध प्रकाश, इस सुश्रुत का रेफरेंस है इसलिए यहाँ पे निरुद्ध प्रकाश जैसा व्याधि का है उसका भी वर्णन है। गुदगत है तो भगंदर आर्ष भोजना वृषणगता वृद्धि। तो इस तरह से स्थान संशय में जो है तो अलग अलग स्थान में जिस स्थान में जाएंगे उन स्थानों में व्याधि निर्माण करेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगतास्तु ऊर्ध्व जान त्वगमांस शोणिस्था शूद्र रोगाण कुष्ठ, त्वचा और मांस और रक्त की दृष्टि से वहां पे विषर्प कुष्ठ जैसे। मेदोगता ग्रंथि अपुचे अर्बुद, अभी मेदोगत में देखा जाएगा तो ग्रंथि अर्बुद गलगंड अलजी प्रभु मेदगत दुष्ट, लेकिन हम प्रमेय में देखते हैं कि मेद की दृष्टि है जो मूत्रगत कहा गया, बस्तीगत कहा, वहां पे वो विमार्गमन की संप्राप्ति वहां पे बनती है, तो वो जो है तो वो मेदगत जाके प्रमेय नहीं बनता, मेद को विमार करके वो प्रमेय बन जाता है, वो इसलिए वो जो स्थान संशय है वो अलग है। तो मेद के स्थान में जाएंगे तो मेद के ग्रंथि अर्बुद अपची आदि विकार वहां पे निर्माण। अस्थिगत विद्रोधी अनुशयन आदि पादगत श्लिपद वात शोणित कंटक, ये सभी विकार जो है तो उन स्थानों में जाने के बाद दोषों का प्रकोप होके उनका स्थान से होने के बाद जिस स्थान में जाएंगे उस स्थान में वो व्याधि उस स्थान के अनुषंग से व्याधि निर्माण हो जाएंगे। सर्वांग जाएंगे तो सर्वांगगत भी व्याधि निर्माण है, संप्राप्ति है लेकिन वो अभी ज्वर में सर्वांग रोग प्रभुत्व, ज्वर का उदाहरण दिया है कि सर्वांग ज्वर जो है तो संप्राप्ति जो है तो उसके आमाशय में है, लेकिन वो ज्वर से अग्निमांद्य से निर्माण होने वाला आम जो है तो सर्वांगगत होके वहां पे अवरोध सर्वांग अवरोध निर्माण करके स्वेदावरोध निर्माण करके वहां पे ज्वर निर्माण करता है, इसलिए वो सार्वधिकता वहां पे दिखाई देती है। इसलिए सार्वधिकता है कि नहीं इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। तेषामेव अभिसन्निविष्टानाम पूर्व रूप प्रादुर्भाव, पूर्व रूप प्रादुर्भाव जो है तो
स्थान संशय कृत्वा भावी व्याधि प्रवरुक्त की व्याख्या में हमें देखने मिलता है कि स्थान संशय के अवस्था में भावी व्याधि प्रबोधक, तो पूर्व रूप का प्रादुर्भाव जो है तो किस अवस्था में होता है, स्थान संशय अवस्था में। प्रतिरोगम वक्षाण तथा पूर्व चतुर्थ क्रियाकाल, चतुर्थ क्रियाकाल जो है तो स्थान संशय है, और इसी स्थान संशय की अवस्था में हमें पूर्व रूप निर्माण हुए दिखाई देते हैं। इसलिए पूर्व रूप के दृष्टिकोण से जब भी देखते हैं तब हमें पहले स्थान संशय अवस्था निश्चित तौर पर हमें ध्यान में आनी चाहिए। दोष विकार स्थान, इसको तो हम सभी जानते हैं कि किस, उसकी उपमा यहाँ पे दी है, नैभसी मेघ तत्र वर्षति। तो जिस वायु जो है तो जहाँ जहाँ जो बादल है उन्हें लेके जाएगा वहीं पे वो जो वर्षा करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें ये भी मालूम है पित्तम पंगु कफम पंगु जो है तो वहाँ पे वायु को यहाँ पे जैसे कि बरसात के लिए कारण कहा है, इसी ढंग से वो शरीर में दोष विकार स्थान निश्चित के लिए जिस स्थान में दोष जाएंगे उस स्थान में वहां पे वो व्याधि निर्माण करेंगे। कृष्णम सार्वधिक अर्धम, अर्ध शरीर में या विशिष्ट अवयव में, वापि यत्र अंगे या किसी स्थान में कुपितो भृशम दोष विकारम नभसे मेघवत तत्र वर्षति। इस तरह से जो स्थान है उस स्थान में जहाँ पे वो स्थान संशय कर रहे हैं उस स्थान के दृष्टिकोण से व्याधि निर्माण हो जाए। अभी एक पैथोलॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आता है, वो है लीन दोष। नाथर्थ कुपिताच्चे लीनो दोषो मार्गे तिष्ठति, मार्गे तिष्ठति, यहाँ पे वो मार्ग में तिष्ठति अवतिष्ठति, वहां पे बैठे हैं, लेकिन वो क्या है, निष्प्रत्यनिकम कारेण हितुम असाध्य कृत्यम। वो जो है तो हम देखते कि खास करके मार्ग में वो है लेकिन वो लीन है, मतलब वो अपने कार्य जो है अब नहीं दिखा रहे। तो कौन से कार्य, विकृत कार्य नहीं दिखा रहे। कब दिखाएंगे, काले नहीं हेतु असाध्यम, तो वो निष्प्रत्य, उनको अभी तक किसी का ये नहीं मिला है, बल मिला नहीं, लेकिन कालो सापेक्ष दृष्टिकोण से हेतुओं का बल मिलेगा तो उनके परिणाम जो है तो लक्षण जो है तो व्याधि बढ़ने के या दोषों के लक्षण जो है तो दिखाई देंगे। तो इस दृष्टिकोण से लीन दोष जो है तो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ पे आया है। स्थान के दृष्टिकोण से स्थान में दोष जो है तो लीन रह सकते हैं, और लीन दोष जो है उन्हें कहीं हेतु सातत्य या हेतु मिला तो तुरंत वह वहाँ पे प्रकोप निर्माण कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते थे, इसमें विषम ज्वर जो है तो उसको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और दूसरा श्वास व्याधि है, इसको भी हम लीन दोष के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो पंचम क्रियाकाल जो है तो व्यक्ति अथवा ऊर्धम व्याधि दर्शन वक्षण शोफ अर्बुद ग्रंथि विद्रधि प्रबुद्धम, तो ये जो प्रवक्त लक्षण है, अब ये लक्षण जो है तो यहाँ पे प्रवक्त मैनिफेस्टेशन जो है तो अच्छे ढंग से प्रवक्त क्लियर मैनिफेस्टेशन जब निर्माण हो जाते हैं तभी उसे व्यक्ति कहा है। तो व्यक्तता तो है लेकिन फिर भी प्रवक्तता, और बार बार दिखाई देती है, जो है तो रिपीटेड भी दिखाई देते कि जैसे विषम ज्वर में देखते कि आज जो बुखार आया है कल नहीं आएगा लेकिन परसों आएगा, तो इस तरह से वो श्वास में आज वेग आ गए कल भी आ जाएंगे, या फीवर रहेगा तो कंटिन्यूस रहेगा। तो इस तरह से प्रवक्तता जो है तो कंटिन्यूएशन जो है तो सातत्य जो है लक्षणों में दिखाई देना चाहिए। कुछ लक्षण दिखाई देते और फिर दिखाई नहीं देंगे तो वो वैदिक का व्यक्ति नहीं हो जाएगा, वो कोई संचयादि अवस्था तक ही सीमित रह जाएगा। तो इसलिए प्रवक्त शब्द यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस दृष्टिकोण से ज्वर अतिसार प्रभृति नाम, तो ये पंचम क्रियाकाल है। तो ये जो है तो वैदिक के मैनिफेस्टेशन जो है तो पूरी ढंग से वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसे वैदे दर्शनम कहा है। वैदिक का दर्शन हो रहा है, क्या अभी समझ में आ रहा है स्पष्ट तौर से कि व्याधि निर्माण हो गया है, तो ये पंचम क्रियाकाल है। और लास्ट का जो है तो भेद अतः ऊर्धम एतिम ऐशाम अवदीर्णम व्रण भावानाम व्यापन्नम षष्ठ क्रियाकाल। अभी इसमें जो है तो अवधारण जो है व्रण भावानाम, मैंने पहले ही बताया कि लास्ट में उन्होंने व्रण का ही उदाहरण भेद में दिया है। तो व्रण व भाव, व्रण जो है तो उसका भेद होके वहाँ पे अवधारण होके वहाँ पे जब निर्माण हो जाता है उसके लक्षण जो निर्माण होते हैं उसे साथ में उन्होंने व्रण को तो कहा है, लेकिन ज्वर अतिसार प्रभृति, ज्वर अतिसार आदि
सभी व्याधियों को भी उन्होंने वहां पे भेद में लिखा है दीर्घ कालानुबंध। अभी जो है तो मैंने पहले ही बताया कि भेद को हमें व्याधि के टाइप्स के तौर पे देखना चाहिए। जैसे कि ज्वर है, ज्वर के वातज पित्तज कफज ज्वर ऐसे निर्माण होना, इसको हम भेद नहीं कह सकते हैं। ये तो व्याधि के प्रकार है, व्याधि भेद है जो हम पढ़ाते हैं। लेकिन छठक्रिया काल में भेद जो है तो दीर्घ कालानुबंध, जैसे कि वातज ज्वर जो है दीर्घ कालानुबंध चल रहा है और उसके कारण जो वहाँ पे उपद्रव स्वरूप जो व्याधि निर्माण हो जाएगा उसे ही भेद कहेंगे। ज्वर अतिसार प्रभृति नाम दीर्घ कालानुबंध। तो दीर्घ कालानुबंध रहने के कारण वहाँ पे जो सिक्वेली या उसके जो उपद्रव निर्माण हो जाते हैं उन्हें ही भेद कहा है। तत्र प्रतिक्रियमाणम असाध्यम उपयंती वातादि लक्षण भेदात्व भिन्न। तो इसे देखे जाएगा तो असाध्यत्व, ये व्याधि जो है तो भेद अवस्था में वहाँ पे दीर्घ कालानुबंध के कारण वो असाध्य बन जाते हैं। और वातादि लक्षण भेदात्व भिन्नता, इसे हम पढ़ाते हैं लेकिन वो उसमें लक्षण की भिन्नता जो है तो व्याधि सापेक्ष वहाँ पे दिखाई ही देती है। जैसे कि वातज ज्वर है और वातज ज्वर के वहाँ पे अवस्था जो है तो छठ क्रिया काल के दृष्टिकोण से षष्ठ अवस्था में उसके उपद्रव होंगे और उसके और लक्षण जो है तो वहाँ पे दृष्टि होता है तो भेद भिन्नत्व। इस तरह से छठ क्रिया काल जो है तो सुश्रुत में वर्णन किया है। धन्यवाद। तो फिर से YMT कॉलेज के सभी टीम, खास करके रोग निदान विभाग के अर्चना मैडम, जय मैडम आदि सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये छठ क्रिया काल और उसका डायग्नोस्टिक अप्रोच प्रेजेंट करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for such a wonderful, elaborative, and thought-provoking session. Thank you once again, sir. Now, I would like to welcome and introduce. Our chairperson for the first session, Dr. Subhash Wage, sir, to have a words of thought. It is an honor for us to have you with us, sir, today. Sir is a principal professor and head of the Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan, Jupiter Ayurved College, Nagpur. Sir has completed his BMS from GAC Nagpur. Also, sir has completed post-graduation in Rog Nidan from Sri Ayurved College, Nagpur. Sir has written 15 Ayurvedic books, and for that, sir has got Best Book of the Year award from Ranade Foundation, Pune for a couple of times. Sir has written 45 research articles in various national, international, peer-reviewed journals. Sir has revived 8 lost Samhitas of Ayurveda, and sir was facilitated at Latur by Ayurveda Update Group for the same. Sir is on the editorial board of ISSN journals. Sir has presented many research papers in various national and international conferences. Sir has got twice the Best Paper Award for the same. Sir was a member of team for framing Nidan Dictionary by Government of India. Sir has been invited as a resource person to many national and international seminars and conferences. Also, sir has delivered lectures for international delegates of Brazil, Portugal, and Russia. Welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, Palekar sir, for precisely introducing me. And first of all, I would like to thank the organizers, particularly Dr. Archana Gharge madam, Dr. Jai Kiran madam, and other my Vidanian brothers and sisters there in Department of Vidana, Shivani Borel madam, there in Department of Rog Nidana at YMT Ayurved College in Mumbai. First of all, let me congratulate my friend Dr. Arun Dudmal sir, who had beautifully presented the subject, and he tried to correlate the Shatkriya Kal
or you try to study the Kshatriya call from various angles as it is expected from him. Though Kshatriya Kal indicates the 6 stages of therapeutic intervention, but therapeutic intervention is not possible without diagnosing a disease. So Acharya had said, Sushritacharya said himself, Yastur Yasturogam avidnaya arvate karmani bhishaka tasya siddhi aduchya. So without diagnosing a disease, no therapeutic intervention is possible. So in that way, while describing the Kshatriya Kal, Acharyas have also mentioned the diagnostic clues to diagnose the particular condition and accordingly to employ the therapeutic measures. So in first 3 stages, Sanchay, Prakop and Prasar, one may not get that much clue about the diagnosis of disease. Today's topic was Kshatriya Kal and the diagnosis of disease. But even though some of the features are mentioned by Acharyas, particularly with regard to the doshas, what doshic features we can get in Sanjay, Prakop and Prasar, and accordingly we can administer a treatment. These 3 stages, if we treat the disease in within 3 basic stages, Sanchayate Aprudha dosha na labate uttarasu gatishu. Te uttarasu gatishu bhavanti balvantara. So we can erase the disease itself and prevent the further propagation of the disease. Well, from next stages, Sthana Sanshaya, Vyakti and Veda, we get the clear idea of the disease. Sthana Sanshaya, at least Sthana Sanshaya Kuda Bhavivade Prabhupadakam Dosha Kurvandi Yat Lingam Purupanta Duchate. So in from Sthana Sanshaya Avastha, we get the idea about the prototypical features of the disease. For example, if it is Vata Jora, excessive yawning, Jrumba, Pitta Jora, Daha, burning in the eyes, and Kapha Jora, the Aruchi, anorexia, we get the idea about the possible type of Jora and other diseases like Prameha, etc. In Vyakta Avastha, the clear-cut idea of the disease, whether it is Trirup Rajashma, Shadrup Rajashma, or Ekadashrup Rajashma, depending upon the development of the features, we get the idea. So we get the diagnosis of the disease from these things. In Bheda Avastha, there is a differential diagnosis of disease, not only differential diagnosis, but the chronic sequelae, as mentioned by my friend. Joratisar Prabhuti Nam, Dirgha Kalanubanta. Prabhuti Nam, all other diseases also. For example, Kasa, the later on manifestation could be the Shahaj Kasa Rajashma, Pratishaya Sanjati Kasa Kasa Sanjati Kshaya. So all these Indarthika Rogas, one disease giving rise to another disease, they can also be included in this Bheda Avastha. So the Bheda Avastha Kasa could be Rajashma, accordingly Jaladhara, the Prameha. All Prameha may ultimately may lead to the Vatas Prameha, that Madhumeha. So accordingly we get Bheda Avastha, accordingly Jaludhara Avastha also. But my point is, we should extend the Vyapti of Kshatriya Kal in today's context. For example, and we should evolve a strategy how we can test the different avasthas in laboratory. That should be our motto, or in today's context. For example, I will give one example. If you take a Dhamni Pratijya, atherosclerosis, it is a systemic disease. Sanchaya, Prakop, Prasar. Now you check out the lipid profile. Those who consume the Kapha Prabhakop Ahar Vihara, and in those individuals, we can regularly have a follow-up of the lipid profile. Then in the Sthana Sanshaya stage, whether it is altered greatly. And in Vyakta Avastha, it will create the features. In Vyakta Avastha means it will occlude the arteries to the extent that it will give rise to the features. Since it is a systemic phenomena, and as it is mentioned in our science also, if it is occluding the spermatic artery, then there is klivata, impotency, as mentioned in our science.
If it is occluding the coronary arteries, then there could be coronary syndrome. If it is occluding the brain arteries, there could be cerebrovascular episode. So, and we the important point that we can measure the alteration of lipid profile in the laboratory in for earlier stages, and accordingly we can erase the disease there itself by suggesting the patients the preventive measures and probably with some therapeutic interventions. So once again, I thank the organizers for giving me the opportunity to moderate the session. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for the moderation of the session and for enlightening on this topic. Thank you so much once again, sir. Now, I would like to request Dr. Shivani Gupta ma'am to welcome and introduce our chairperson, our guest speakers for the second session, Dr. Archana Gharge ma'am. Over to you, ma'am. Gratitude, Dr. Anil, for giving me this wonderful opportunity to introduce Dr. Archana Gharge ma'am, who is also our dynamic HOD and colleague. She is heading Department of Rog Nidan evam Vikriti Vigyan of Dr. G.T. Paul Foundation's Yerla Medical Ayurvedic College and Hospital. Ma'am has completed her BMS from KG Mittal Ayurved College, Mumbai, and post-graduation from R.A. Poddar Ayurvedic Medical College, Mumbai. Currently, ma'am is pursuing her PhD from DMM Ayurved College, Yavatmal. She is contributing her excellency in academic field since last 20 years. She is MUHS approved PG and PhD guide also. Ma'am has published more than 20 scientific papers in peer-reviewed journals. Now, I am taking the opportunity to invite Dr. Archana Gharge ma'am to give her illuminating oration on the topic of clinical application of Trivid Pariksha. Over to you, Archana ma'am. Thank you, Shivani madam, for my introduction, and thank you to all speakers also. So, in today's lecture, I'm going to talk on the clinical interpretation of the Trividha Pariksha. This is a topic which has been decided for me. So, first of all, we will see what is the Niruক্తి of Pariksha. Paritaha Iksha. The word Paritha means from all the directions and Iksha means observation. So the meaning of the word Pariksha is observation of the patient from all the directions. Excuse me. Just 1 minute. The comprehensive clinical examination is the basis of the proper diagnosis of the disease, and the proper diagnosis of the disease is the basis for planning a proper treatment protocol for the patient. According to the Ayurveda, the clinical examination is twofold. It should be methodically done, including 2 stages of the examination, and these 2 stages are Rogya Pariksha and Rogi Pariksha. रोगमादव परीक्षेत ततोनन्तरम् औषधं ततः कर्मभिषक् पश्चात् ज्ञानपूर्वं समाचरेत् यस्तु रोगम् अविज्ञाय कर्माणि आरभते विषात् अपि औषध विधानज्ञस्तस्य सिद्धिं यद्विच्छया. So it is very important to examine the patient as well as the disease very carefully for planning the treatment protocol, and before planning the treatment
we should do the proper diagnosis of the disease. Okay. So, what is Roga Pariksha? Roga Pariksha is a disease examination. Understanding the nature of the disease helps in its accurate diagnosis, and it is done by analyzing the Nidan Panchak of the disease, that is the 5 components of the disease diagnosis, such as Nidan, that is etiology of the disease, Purva Rupa, that is prodromal features of the diseases, Rupa, that is clinical features of the disease, Upashaya and Anupashaya, that is therapeutic trials of the diseases, and the Samprapti, which is the uh, end product of all this, that is the pathogenesis of the disease. So, next, going to the next slide, what is Rogi Pariksha? Rogi Pariksha is the examination of the patient, Atura Pariksha, and different types of Rogi Pariksha are described in Ayurvedic literature for the diagnosis of the diseases, which are there are many which are described in Ayurvedic. In modern, only 5 methods of examination are described, that is inspection, palpation, percussion, auscultation, and interrogation. But in our Ayurvedic granthas, many methods have been described. Out of these, first is the Dvivida Pariksha. We can call it as two-fold examination. It includes Pratyaksha and Anuman Pariksha. Then second is the Trivida Pariksha. It is a threefold examination, which includes Darshan, that is inspection examination, Parishan, that includes palpation, percussion, and auscultation methods, or by feeling the disease area. And the third examination under this is Prashna Pariksha, that is the questioning or interrogation. The other Trivida Pariksha is also explained in Ayurveda, that is Pratyaksha, Anuman, and Aptopadesh. The next one is Chaturvida Pariksha, or we can say it as four-fold examination, that is Aptopadesh, Pratyaksha, Anuman, and Yukti Pariksha. Trivida Pariksha comprises of the aspects of Roga and Rogi Pariksha. Charak of the Trivida Pariksha is Aptopadesh, Pratyaksha, and Anuman Pariksha. And according to the Charak and Bhagavata, 3 different Trivida Pariksha explained are Darshan, Sparshan, and Prashna Pariksha. Trividham खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षं अनुमानं चेति. Okay. So, what is Aptopadesh? Aptopadesh is the statement stated by the highest authorities in our Ayurvedic literature. The Vedic literature written by the Aptas or the enlightened people with the divine power, it guides us on aggravating factors of the diseases, doshas, involvement in the disease, manifestation of the disease, acute and chronicity of the diseases, dosha samurchana in sharira, mana, or both regarding sharirik vyadhi and manasik vyadhi, information about the pain, association with the certain smell, taste, color, touch, and sound, all these indriyas, and factors affecting the treatment, its principles, avoidance of the etiological factors, etc. So the next one is the Pratyaksha Pariksha. Asa Pratyaksham Nama Tadada Mana Ch Indriyashcha Swayam Upalabhyate Tatra Atma Pratyakshaha Sukha Dukha Ichha Dveshadayah Shabdadayah Indriya Pratyakshaha. So, Pratyaksha is the direct examination of the patient using the sensory organs. Feelings like happiness, desire, these are perceived through the indriyas. Different body conditions that can be also assessed by using, and most patients can be checked by the physician's careful direct examination. Only the Rasanendriya or the test examination is not directly done by the physician. It is done indirectly by the Rasanendriya of the animals, like in Prameha, it is done by the Rasanendriya of the Pipalika or ants. In Rakta Pitta, to detect whether the Rakta
or the discharge of the blood is pure or impure, we can assess that by using the test census of the animals. Now, third one is the Anuman Pariksha. It is the inferential examination. The inferences made or the assumptions as power of Agni, digestion, metabolism, exercise endurance, strength of the person, existence of the mind, various perceptions, etiological factors of the diseases, degree of the vitiation of the doshas. These are all aggravating factors of the diseases. These are all tested by the Anuman Pariksha. For example, in Grantha there is given that Tadjatha Agni Jarana Shakya Parikshita Balam Vyayama Shakya. If the Agni of the patient is examined indirectly by Jarana Shakti of that patient. Means if the Jarana Shakti is good, we can do inference that the Agni of the patient is very good. And accordingly, other types of Agnis like Visham Agni, Sama Agni, Tikshana Agni, Manda Agni, like that from Charan Shakti we can diagnose what is the patient's Agni side of. Balam Vyayama Shakti. Bal can be assessed by the Vyayama Shakti of the patient. So these tests are done through the Anumana Pariksha of the patient. Now the next type which is included under the Trivida Pariksha is Darshan, Sparshan and Prashna Pariksha. Darshan, Sparshan, Prashna Parikshatacha Roginam. It is the Sutra of Ashtanga Hridaya Sutrasnan. The other one is the Hetvarthi Sadhana Balam Pariksha. Vachanat Budhayi Parshan Mardava Shaityahi Parikshe Sa Viparyayi. So the term Parshan Pariksha. The term Pariksha is used for the examination which is done on the patient for the appropriate diagnosis. The prime duty of any physician is to diagnose the ailment of the patient, and the diagnosis can be done just on the basis of one type of examination. In Ayurveda, different type of examinations have been mentioned, which were and still are very much useful in diagnosing the various diseases in the patient. So, two basic processes of the examination of the patient are mainly there are two methods. One is interrogation or the history taking of the patient, which comes under the Prashna Pariksha, and the second one is the physical examination, in which Darshan and Sparshan Pariksha of the Trivida Pariksha is included. The pathological and radiological examinations are also useful for the confirmation of the diseases with the physical correlation, and Ayurveda has mentioned in detail about the various parikshas or the examinations which have been categorized as Dvividha, Trivida, Panchavidha, Shadvidha, Ashtavidha Pariksha. In today's lecture, we are going to see about the Trivida Pariksha, that is Darshan, Sparshan and Prashna Pariksha, and all its aspects will be discussed in perspective of both Ayurveda and modern medicine. And these basic methods which are practiced today with the modern diagnostic tools, it has very important place in the diagnosing the diseases. First one is the Darshan Pariksha, that is inspection method. Varna Samsthana Pramana Chhayaha Sharira Prakriti Vikaro Chakshu Vaishayikani Yani Cho. Chakshurindriya Vignayaha Sharira Upachaya Apachaya Ayur Lakshana Bala Varna Vikaradayah. Sharira Upachayeti Upachayah Thaulyam Apachayah Karasya Balamatra Utsaha. Means the things which can be assessed through the Darshan Pariksha or by using Chakshurindriya are Chhaya, Praman, Varna, Samsthan, Sharirastha Prakriti, Vikar, Chakshu Parikshan, Upachay, Apachay, Ayur Lakshan, Bala, Varna, and the other Vikaras. Vikaras also can be identified by the Darshan Pariksha or the Chakshurindriya Pariksha. The in Sushruta Sutrasthan, Sushrutacharya has mentioned that Upachaya, Saulya, Apachaya, Karsha, Bala, Utsaha, these things can be assessed in patients using the Chakshurindriya. Ashtanga Hridaya Sutrasthan, Sarvanga Sundar Tika has mentioned that Darshanena Drishtya Kasa Mehadayarteshu Kita Shukla Varna Samsthana
प्रमाण उपचय छाया विमुत्र chardita dikam. Okay. So in these diseases also we can use darshan pariksha very effectively for the primary diagnosis. Darshan pariksha or inspection begins with an active observation of the physician. The following things can be detected through the examination by the physician by using chakshurendriya, that is color, varna, if it is normal or abnormal, if there is any kind of vyvarnim that can be noticed by chakshurendriya of the physician, shape and size, akriti of various organs or the patient's appearance, if there is increase or decrease in the body structures. The next is the measurements, that is praman. In that we can see the abdominal girth, joint circumferences, the states of joint inflammation, complexion, that is chaya, sharira prakriti vikara. Looking at the patient, we can observe his or her appearance or look, if it is ill look, pallid look, or catatonic look. Then by darshan pariksha, we can also assess the style of walking of the patient, that is gait, which is very much important diagnostic tool in various neurological conditions. Then signs of healthiness, आयु लक्षण, समधातु अवस्था, सममांस प्रमाण स्थूल, that can be assessed by the darshan pariksha. Bala utsaha also we can observe on the patient's face by using the inspection method, and other findings also can be examined visually, like many signs of the diseases like neck rigidity, state, like that. Then 5 signs of the inflammation. Those can be assessed by the chakshurendriya. Now, the darshan pariksha can be correlated with the following, that is clinical examination, and second one is the pathological or radiological examination. First, we'll see about the clinical examination. When the patient comes to us, we should, as a physician, we should observe the patient and do the inspection when he enters our clinic or OPD. So the factors which are elicited by direct observation of the patient, that is chakshurendriya, come in this category. Inspection is done through the patient's general appearance. Patient can be observed for color of the neck growth, that is eye color, hair color, some color, skin color. From that we can identify many abnormalities regarding this vyvarnia. The next is shape. Shape we should be observed for the shape of the abdomen, shape of the chest, shape of the body. From that we can identify the obesity or leanness or parsha of the patient. Movement of the abdominal and chest walls with the respiration. Next, mandala. Mandala are the patches. We can also observe if there are any kind of mandala or patches. Mandala are the various kind of patches. So if these patches, which color they are having, either they are hypopigmented patches or hyperpigmented patches or reddish colored patches. From Varna also we can identify different abnormalities. We should also see for its borders, whether they are regular border, irregular border, on which part of the body they are spread with appearance, whether they are increasing in size day by day. This also should be observed daily in the inspection examination. Next point is upsedha. Whenever there is any kind of upsed, short or edema, you can say inflammation, that also should be looked for. We also see the site of short, where it is. If it is on the upper eyelid, whether it is on the face, whether it is on the ankle of the both legs. So according to the site of Shotha also, the different diseases diagnosis changes. So if Upsedha or inflammation is there, we should check whether the site of the Upsed or inflammation and its appearance
the varna of the site which is having inflammation. Then we should also look Utseva for the other disorders like Granthi, tumors, any extra growth on the bones or in the subcutaneous region like lipomas, etc. Lipomas are the subcutaneous nodules. So those are also seen by the darshan pariksha or the inspection method. By the inspection method, we can assess the vrana if there is any kind of scar, stretch mark, any lesion, if there are any kind of rashes on the body, or if the patient is having the history of wounds like trauma, burn injuries, that should be observed or looked for the to diagnose the vrana. If vrana is there, we should uh, observe the vrana, whether it is in condition of the fresh vrana or dushta vrana. So that also can be observed by the inspection method. In the cases of ascites, we should uh, inspect the abdomen for the dilated veins or the spider maybe appearance. If it is in the severe state of the disease, then in the ascites only we should look for the abdominal distension, any kind of depression, umbilicus, eversion, other kind of things which should be noted for the inspection method are erythema, subcutaneous hemorrhage. All things we can observe in the inspection method. Sometimes color changes of the tongue, sclera of the eye, conjunctiva, nails, gum, teeth, and soft palate also a soft palate can also indicate some diseases. Like blue and black colored discoloration of the skin can indicate the cyanosis, thrombosis, blue baby syndrome in the babies. Red discoloration can indicate the inflammation of the skin. In sclera, if it is a red coloration, it can indicate the subconjunctival hemorrhage. If redness is on the fingertips, it may indicate Raynaud's disease. Okay, so red color uh, can be for assist for many kind of abnormalities. If there is yellow color of discoloration of the sclera, nail, skin, or urine, it may indicate the jaundice. If urine is yellow colored and if the patient is not having any history of jaundice or liver diseases, we should also go for the history of the if the patient is taking vitamin B12 tablets. You can also give the highly yellow or orange color to the urine. So these are some pictures in which we can see that some diseases can be diagnosed by the inspection method in first picture, first image. We can see the pallor in the anemic patient. The second image is indicating the highly yellow color or icterus in the patient of the jaundice. The third image is indicating the facial or Bell's palsy disease by the inspection method. See, if there is the palsy of the facial nerve and the patient is having Bell's or facial palsy, we can get these changes in the facial expression, that is inability to wrinkle brow, drooping of the eyelid, inability to puff cheeks, asymmetrical smile, drooping corner of the mouth. These all symptoms we can observe in the patient of the palsy by the inspection method. In next slide, we can see the images of some changes in the color of the skin. The first image is indicating the hyperpigmentation. The second image is indicating the hypopigmentation, that is white color discoloration, which may indicate the diseases like vitiligo, leukoderma. In fungal infection also, there are white colored patches, but the appearance is a little bit different. The third image is indicating the subcutaneous purpura. So these things can be observed by inspection.
with the changes in the color of the skin. Third image is showing the change structure of the nail. Okay, it is a spoon-shaped nail, which is the identifying mark of the iron deficiency anemia. Okay, koilomania. So by inspecting the nails, also we can diagnose many diseases. This slide is indicating the clubbing of the nails. Okay, so first image is the normal nail bed, and second one is the club. If there is the clubbing of the nails, it can indicate many diseases which are related with the respiratory system, even lung cancer also. In the first image, there is one diamond shaped wheel, which is the normal one, and which disappears when there is clubbing of the nail, and it happens in many lung diseases, lung cancer also. Now the next image is about cyanosis, that is central and peripheral cyanosis in lung diseases and cardiovascular diseases also. So you can see the cyanosis, that is bluish color discoloration of the tongue, lips, then the fingertips. It can also happen in the tips of the toes when cyanosis occur in patients. This image is showing the very important sign in the psoriasis, that is the ostrich sign. There are blood dripping out of the skin with the discoloration of the skin. Okay, so in psoriasis and eczema, when we are doing the differential diagnosis, because in both there are black colored patches with the rough and very ferocious kind of skin, but the ostrich sign, which identifies psoriasis, is different from the eczema. So this also we can see in the inspection method. This is a fan neck deformity, which is mostly seen in the osteoarthritis patient. Mostly it is commonly it is a upadrav or complication of the osteoarthritis. In Ayurveda also, Ayurvedic Sanhita has mentioned that osteovakrata or sandhivakrata is the upadrav of the sandhivat. So this kind of fan neck deformity the patient is having, we can diagnose osteoarthritis sandhivat, and we can also know the duration of the disease. We can do anuman that the patient might be having the history of this disease since many years, because chronicity, it indicates the chronicity of the disease. The next one is the Herberdon's note, which is very indicative sign of the osteoarthritis. It is also as seen as a complication of the osteoarthritis. In Ayurveda also it has mentioned that there are changes in the akar of the sandhis. So sandhi vakrata, asti vakrata, changes in its shape, those can also be diagnosed by the inspection method. Okay. In this picture, we can see the muscle atrophy. You can see the normal muscle and atrophied muscle, which are very common symptoms in the neurological disorders, and it indicates the muscle wasting, mouth shows, which has been described in our Pakshaghat. So we can identify the muscular wasting in this image. Patient also we can effect it. So this is a patient to diagnose various kind of abnormalities. Now here are few examples of Granthaksha Vyadhis where mainly lakshanas which can be assessed by the darshan pariksha have been mentioned, like Ketaki Juli Sandhibhava Varna in Panduroga, which indicates the pallor in the anemic patient. Next is Rakta Pita Shakrul Mutro, Haridra Swak Nakhanana. That is icterus on the body and highly yellow colored urine and stool in jaundice. This Lakshana has been mentioned in Kaupika Kamala. Next one is Sila Pishta Nibham Varchaha.
It indicates the appearance of the puri, that is clay-colored stool, Shilapishna Varna of puri. It is seen in Buddhapatha or Koshkashti Kamala. Next one is in the Nirukti of Pushna, it is mentioned that Pushnati Vapuhu means Krishna Varnata or Vaivarnyata in the patients of Pushka, that is hypopigmentation, hyperpigmentation, or very colored discoloration of various kinds of the Mahapushka, Shuddha Pushka. Udara Vruddhi is the very prominent Satyatma Lakshana of the Chalodar, that is the abdominal distension, Parivritta Nabhi, everted umbilicus, Udara Pradeshe Sira Jhala Darshan, that is prominent veins, spider navy appearance in Jalodhara patient. Avila Mutrata, it indicates the appearance or the physical appearance or color of the urine in the patients of the Prameha, turbid urination in the Pramehi patient. Budena Bahudrava Saranam. In Atisar, it has been mentioned that Malapravrutti is Bahudrava. Bahudrava means it has most of the part of Dravansh and less part of Purish. So this can be also diagnosed by the Darshan Pariksha. Akshay Kutashot in Pandurok Purvarupa, this symptom has been mentioned. Dheka Varnata, that is greenish or yellow skin color, like frog skin in the patients of the Kamala, Kumbha Kamala or Halima, which presents the different stages of the Kamala according to its severity. Now, this one example I have given, Sadhigat Vat Lakshan, Vatapurna Druti Sparshah, Shotah Sandhigate Mile, Prasarana Kuncharayo, Pravrutischa, Savedana. Here, the first symptom, that is Vatapurna Druti Sparshah, can be assessed by Darshan Pariksha. Shotah can be noticed by Darshan Pariksha. And third symptom, that is Prasarana Kuncharayo, Pravrutischa, Savedana. This can be assessed by Darshan Pariksha as well by asking the patient that where the patient is having pain, or what kind of pain is there, when it aggravates. So all these questions are asked to the patient, and by interrogation method, the third lakshan is assessed. So this is just one example. There are all diseases where we have to examine the patient by these three methods, that is darshan, inspection, pershan, which includes palpation, percussion, and up to some extent auscultation, and third one is the prashna pariksha, that is interrogative method. Now the second part is the pathological examinations. Now in the part A we have seen that how to examine the patient physically. Now here we are going to use the darshan pariksha in various biomarkers like urine, sputum, sweat, first discharge, and some other body fluids which are aspirated for the diagnostic purposes, like physical, microscopic, and cytological examination. And those body fluids are cerebrospinal fluid, ascitic fluid, pleural fluid, fluid in the knee effusion. So all kinds of these body fluids can be examined by the darshan pariksha for the diagnosis of various pathological conditions. Radiological examinations, the modern technologies used for the diagnosis are the advanced version of the darshan or inspection pariksha. Nowadays, various techniques are introduced for direct inspection, that is darshan pariksha of various organs, bones, etc., like X-ray, CT scan, MRI, sonography, 2D echo, ECG, endoscopic examination, hypnosalpingography, angiography, microscopic examination of some biological biomarkers like peripheral blood smear, urine, stool, first swab. These are also examined microscopically for various disorders like bacteria or some pathogen with different kinds
kind of staining like AFT. We can identify the tubercular bacilli also in sputum and sputum. And all these are observed visually and by the examiner or the radiologist, pathologist directly, and they can these all type of examination come under the Darshan Parikshha or the inspection method. We will the Granthokkar references Darshan पाणिना प्रकृति लक्षण मृदु दाक्षिण्यत्वादयम्. Pushpita and Sharak have mentioned the importance of the Sparshan Pariksha in various disease diagnosis. Now, things which are detected with the help of the Sparshan Indriya, that is touch, are as follows: like normal abnormal findings of the skin of the upper and lower limb. Example, clammy skin in hyperglycemia or dry skin in eczema. Then by Sparshan Pariksha, Ushna and Shita Sparsha also indicates some abnormalities like Ushna Sparsha, that is temperature in case of fever, inflammation, calor. Shita Sparsha or hypothermia in the cold skin. Stira or Kachin, that is hard Sparsha, as in Kaphodar or Klihodar. Mrudu or smooth Sparsha in Pittodar. To check the mobility, whether it is mobile or immobile. So these all things are detected by the touch examination or the Sparshan Pariksha. Then determination of painful areas are also done by Sparshan Pariksha as Sparshana Sahatva and Pidana Sahatva. Like in Kafaja Shotha, the features which can be perceived by Sparshan Indriya, it doesn't elevate or get depressed. So we can use this examination in the Kapha Shotha and other kinds of Shotha also. Pulse examination is also done by the Sparshan Pariksha. The shape or firmness or location of any lesion in any region can also be palpated by the Sparshan Pariksha. There are some other examinations also which can be done by Sparshan Pariksha in many diseases. Like we assist the different kind of reflexes like superficial tendon reflexes and deep tendon reflexes, that is reflexes in the patient of the hemiplegia, gait, style of walking, muscle power gradation. We can assist by the Sparshan Pariksha. Hypotonia and hypertonia of the muscles, cranial nerve examination. These are some examples which can be assessed by the Sparshan Pariksha in the patients of the hemiplegia or Pakshaghat. We can do examination of joints in the patients of Sandhivat, Amvat, Vatarakta, by Sparshan Pariksha, patellar tap, some special examinations or signs for specific diseases like patellar tap. Now, this is very much important role of the Trividha Pariksha, which plays an important role in the diagnosis of the disease. So, the students must adapt the skill of examining the patient by using all these three methods. Now, these are some examples of the Granthokkar Vyadhi in which Lakshanas are mentioned in the Grantha and which can be assisted by the Sparshan Pariksha, that is Deha Santa injure, Ushna Sparshata or temperature can be noticed by the Sparshan Pariksha. Pronmati, Unnati, that is fitting or non-fitting edema, examination of the edema by pressing, giving pressure at the site of the edema can be done by Sparshan Pariksha in Shotha. Pravasanchiti in Udara, that is Jalodhar, ascitic effusion, if the patient is ascitic, we have to do fluid test, then
uh, we have to look for the other signs also which can be done by the Sparshan Pariksha. Vatapurna Druti Sparshah in the patient of Sandhi Utkat Vat, which is defined as a crepitus in the joint in the modern science. That we have to examine. Parshadnyatvam. Parshadnyatvam, this symptom has been mentioned in the Purvarupa of the Kushtha, that is paresthesia. Patient don't feel any kind of sparsha. So this can be also assessed by the Sparshan Pariksha. Bahalam Hasti Charmavat. This is the swarup of the skin in the patient of Charma Kushtha. Kina Kharas Parsha Parusha. This kind of skin appearance, the other examinations which are done are we look for Sparsha Sahatva and Pedana Sahatva. Sparsha Sahatva is the tenderness on the body part on touch, and Pidana Sahatva is tenderness by giving pressure. So these symptoms tenderness on touch we can see in the patients of the peripheral neuritis, then in some nerve disorders, Siragatvat, Majavasruta Vikara. In peritonitis also there is patient is very much painful, and the patient can't allow the physician or anybody to touch. That kind of thing is there. So these symptoms which can assist by the Persian method. These are some images. This is the image of the assessing the edema, whether it is pitting or non-pitting, by giving the applying the pressure to the swelled area. Now, Persian Pariksha can be correlated with the following clinical methods which are described in the modern science. That is, the first one is the palpation. So the palpation can be light palpation or deep palpation. In light palpation, the examiner tests for any palpable mass, whether there is any kind of rigidity, painful areas, and we have to look for the site or region where the patient is having pain. Deep kind of palpation we have to use this to check any kind of organomegaly in liver, skin, kidneys, etc. Abdominal examination. So palpation of the organs in the per abdominal examination, we look for the liver, that is if there is some kind of enlargement of the liver, like in hepatitis, fatty liver disease, hepatic cirrhosis, disorders related with the spleen, like in malaria, salazar, or any kind of leukemia. Then kidneys also we palpate for some renal diseases. Abdominal palpation in all quadrants is also very much necessary for many diseases in the posture, that is abdominal cavity. Abnormal lymphadenopathies in the umbilical spinal regions can be palpated by the Persian Pariksha, and they can give to the very important stage of the diagnosis of the disease. Now, this image is showing the palpation of the enlarged glands, lymphadenopathies in various areas. Okay, so we have to palpate the patient for the enlargement of the lymph glands in various areas. Now, this is the picture showing 9 quadrants of the abdomen and the different organs which are situated in those quadrants. So we should know, the students must know this image very nicely, because they should know in which kind of disease we have to palpate in which area. Like for the liver diseases, we have to palpate in the right hypochondric area. For the spleen diseases, we have to palpate in the left hypochondric region. Then for appendicitis, we have to look for the right iliac fossa. So we must know the site of all these organs, these 9 regions, to know the reason of the acute colitis pain or udar stool. So abdomen, this must be
palpated very much carefully. We have to see if the patient is having pain. We have to ask the patient if the pain is local or generalized. If it is local, then we have to palpate very carefully and must know in which area the patient is having abnormality. So for that purpose, we must know these 9 areas and the organs which are situated in these areas. Now this is region. We have to palpate for the liver. The patient should be asked to take a deep breath and the pressure is applied to the abdominal wall by the examiner's hand. The liver is not palpated, the examiner's hand should be moved closer to the posterior margin by about 1 centimeter, and the patient is again asked to repeat the deep inspiration, and the process is repeated to identify whether there is enlargement of the liver or hepatomegaly. First, we should know about the hepatomegaly, then we'll go for the cause of it. First, we should know the whether there is hepatomegaly or the liver is in the normal size. For the further knowledge that due to what the patient is having this kind of enlargement, for that we have to add up other diagnostic tools. Clinic examination in the left hypochondric region, skin always palpated when it is 3 times enlarged by its normal size. So we should know the proper procedure of the clinic examination. If skin enlargement is there, we should go for the other diagnostic tool to know the reason of the enlargement of the skin. Students also know how to palpate the kidneys because in the palpation of the organs, the palpation of the liver, skin, and kidneys is very much important, which can give a clue about various organic disorders related to it. So for kidneys, we have to do, we have to place left hand behind the patient's back at the right flank. Then right hand just below the right posterior margin in the right flank. Press your right hand fingers deep into the abdomen. At the same time, press upwards with your left hand. Ask the patient to take a deep breath. You may feel the lower pole of the kidney moving inferiorly during the inspiration, and we have to repeat this process on the opposite side also to check the left kidney. This is the proper position of the hand for palpating the kidney. Now, this is the image of the shifting dullness of the ascites fluid in the patient of ascites. In the ascites, due to gravity, the peritoneal serous fluid shifts to the downside. Hello, am I audible?
Sorry for the interruption. So there are some other signs also which can be palpated by the sparshan area, that is muscle guarding, rigidity of the muscles in the abdominal cavity, rebound tenderness, referred pain, that is if the patient is having pain, whether it is referred from back to loin or back to groin. So that can be assessed by the sparshan pariksha or the palpation method. Now the second uh, method of the examination has been described in the modern science, that is percussion. It is also included over sparshan pariksha. It is a method of tapping on the thorax or the abdominal cavity to determine the underlying structures or pathology. And the sounds are of two types. It is resonant, hyperresonant, stony, dull sound. So percussion is done by tapping the middle finger of the one hand on the middle phalanx of the middle finger of the palpating hand over the chest or the abdominal cavity, and the different sound types produced due to the difference in the density indicate the disease condition. Like there is dull sound of the percussion, it indicates the consolidation in the lung or the ascitic effusion in the peritoneal cavity. If the sound is resonant, it may indicate the COPD, that is obstructive pulmonary diseases in the lungs or the pneumothorax. If there is alteration in the density, can indicate uh, some lung diseases like pneumothorax. These are the images which is showing the percussion method, where we have to place our hand, where we have to give a tap. So this image is clearly showing how to do the examination percussion. Okay. So dull sounds are due to the solid or fluid structures, and the resonant sounds are due to the structures containing air, gas. Okay. Now, sparshan pariksha. In sparshan pariksha, our Grantha has mentioned very important examination, that is nadi pariksha. And in modern science also, pulse examination has been described very elaborating manner. So in Ayurveda, it has been mentioned by Yoga Ratnakar and Bhavprakash, and it has been included under the sparshan pariksha, because by sparsha only we can identify the nadi and accordingly prakruti and vikruti in the patient concentration. It is done by palpating the radial artery at the wrist, rate, strength, rhythm, speed, volume, pressure, and quality of the pulse. Whether it is regular, irregular, all things are examined in case of pulse to determine doshas. According to the gatis, we can identify the doshas or the of the patient. And if there are changes in all these factors of the pulse or any abnormalities there, we can diagnose various physical conditions by palpating the pulse. Now we have seen about the percussion method, palpation method. Now third examination is the auscultation. Other than palpation and percussion, there is also another method of examination described in the modern science, that is auscultation. In this, the respiration, heart, and the abdominal sounds are heard by stethoscope by auscultation. As mainly Shravanendriya is directly involved in this process of examination, but Sparshanendriya also has an indirect role or involvement in this type of examination. So it can be also included under Darshan Sparshan Pariksha according to my knowledge. Now here we can see how to auscultate the respiratory sounds. We have to see for the upper, middle and lower
lower tones. On both sides, listen for the normal respiratory sound. There are bronchial sounds in constipation or fibrosis, crackling sound in fibrosis, pores crackles, LRTI, bronchiectasis, effusion, wheezing, asthma. So, from the sound of the respiration, respiratory sounds can give a very important diagnosis of the respiratory lung disease. Next one here, this image is showing is for 5 areas of the auscultation of the heart sound. So we have to auscultate for the heart sound in these 5 areas. The students should know how to auscultate to listen the heart sounds, whether they are normal or abnormal. So our 5 sides: aortic, pulmonary. There are 4 walls actually: aortic, pulmonary, tricuspid, and mitral wall. And along with that is first point. So for these 5 sides, for the heart sound auscultation, we have to do for the 5 sides while doing the auscultation of the chest, the patient. Doppler examination is also very much plays an important role in the Dhvani Pariksha or the examination of the sound. Doppler sensitivity of 84 against 58 for the stethoscopic aortic regurgitation. It is also used for detecting the broods, arterial broods, the arterial narrowing, measuring the liver span, etc. These are all the advanced modern technologies which can be used for the diagnosis of the various disorders. Now, breathing sound, how to auscultate the breathing sound, starting from the space above the clavicle down to the mid clavicular line on both sides alternatively up to the level of the nipples, then laterally towards the mid axillary line to the 6-7 intercostal space. We have to auscultate for the breathing sound. We have to see for the whether the sound is normal, abnormal, what kind of it is. The air entry is normal or diminished. If the sound is vesicular, growls, crackling sound, bronchi, wheezing. Pitch of the respiratory sound also we should listen for. Heart sounds, normal heart sound is S1, S1, X1, X2. Only heart sound, extra heart sounds can be heard. Some cardiac diseases, S3, S4, murmurs, diastolic murmurs, gallop rhythm, rub, venous hum, and adventitious hum. So this abnormal sound is heard in the patient's auscultation. We should go for the further investigations related with the heart diseases. Vowel sounds, we have to auscultate the abdomen for normal abnormal sounds. We can hear the sounds like hypoactive, hyperactive, and missing sounds. Sometimes the abdominal sounds or the peristaltic movements may be absent, like the paralysis of the uh, intestines or the peritonitis. So in this case, we have to look for the vowel sound. Now, third, we have seen up till now we have seen darshan pariksha, sparshan pariksha. Now we will go to the last one, that is prashna pariksha. So prashna pariksha is the interrogation method. प्रश्नेन विजानीयात् देशं कालं जाति स्थानं वेदना समुच्छाया बलम् अन्तरग्नि मातपुत्रपुरुषाणां प्रवृत्ति अप्रवृत्ति कालप्रकर्षादिषु विशेषान् आत्मसदृशेषु विज्ञानाभ्युपायेषु तत् स्थानीयैर्जानीयात्। प्रश्नेन पृच्छया शूल अरोचक छर्दि रुद्रवत्वं सुच्छन्दनुच्छन्दत्वं दूरपुष्टतां स्वप्नदर्शनम् अभिप्रायम् जन्म अमय प्रवृत्ति नक्षत्र विश्लेष्ट सुखदुःखानि च इति आतुरमुखात् परीक्षेत।
Now, these things have been told by Sushrutacharya and in Ashtanga Hruday Sarvanga Sundara Tika that which things are should be asked to the patient by the Prashna Pariksha. Interrogation is also very effective method about the doctor-patient interaction. We can use it in the bedside manner. It also teaches the students bedside manner also, and it helps to know about the subjective feelings of the patient, like Rupna Samvedya Lakshanas, which cannot be assessed by the chikitsak or the physician without asking him or her. So the symptoms like pain, sensation, feelings of happiness, distress, sadness, anxiety, or depression, those can be asked by to the patient by the interrogative method. So some valuable information regarding etiology of the disease, Sathmia, Asathmia, allergic conditions, Malamutradi Pravrutti, that is natural process of the site and nature of the pain is also interrogative. The other things which are asked, which are included in our case record form, that is long case, short case, we have to ask the patient about family history, personal history, previous disease history, other medical history, Vyadhi Utpatti Kram, that is chronology of the symptoms of the disease. So these all things can be skillfully known from the patient by an effective communication with him or her. The patient statements can be evaluated on the medical backgrounds by an expert physician. The hidden information regarding the medical part can be gathered by talking to the patient in confidence. And the role of Prashna Pariksha or interrogative method is very much important in this. 50% of the patient's information is gathered by Prashna Pariksha. Okay. So according to the Sushrutacharya, Prashna Pariksha gives the information about the following aspects of the patient, that is Desha, place of living, Kalo, season of the disease occurrence, Jati, religion and sex, Vedana is pain, nature of the pain, Bala, Agni, frequency and consistency of Vegas of Vata, Mudra, Purisha, etc. Prashna Pariksha can be correlated with the history taking of the patients, which covers the following aspects like age, gender, religion, address, complaints, occupational history. In case of females, menstrual history, of history, gynec history, then previous treatment if the patient have taken in family history, addiction history, and socio-economic history also. So history taking is a very important part in the examination of the patients. Provisional diagnosis and the treatment requires proper history taking as diagnosis with the understanding to the knowledge. So it is done in detail by the Ayurvedic practitioner as a treatment of the same disease varies with each and every patient. Specific patients are asked as they should not only conclude the Nidan but also Dosha Dusha Sampruchana, Sattva type, Ketu, Samprapti, and Vasha. Now, positive conversation with the doctor makes the patient very much comfortable, and sometimes it may act as counseling also in some psychosomatic diseases. Now, we have seen all the aspects of the Dakshan, Darshan, and Prashna Pariksha in Trividha Pariksha. Now, what are the benefits? So, Rogi Pariksha and Roga Pariksha is the basis of comprehensive protocol of the examination, whereas the exact nature of the disease will be clearly. Three-fold approach helps for the diagnosis of the diseases. The Trividha Pariksha, despite emphasizing nearly 3 types, it also covers a large number of aspects of examination for proper
Nidan, prognosis, Sadhanani, and Chikitsa of the disease. And proper assessment of the disease process step by step, moving the prognosis and getting a clear idea of somebody's limitation in terms of handling a case. It also helps the physician decide can handle the case or it should be referred to other specialists by knowing the mild, moderate, or severity of the disease. It also helps in moving the condition of the patient. We can also know about the Upadrava and Arishta Lakshanas of the patient by asking him the questions. It also helps in planning a comprehensive treatment, including diet, lifestyle recommendation, protocol. And so it's very important that the students of the UG and PG should get bed-sided clinic and bed-sided manner, the OPD and IPD of our hospital, because these all methods of the examination play very important role in the diagnosis of all diseases clinically. So with this last slide, thank you. I will stop my lecture over here. Thank you very much. Over to Dr. Shiv. Thank you, Archana ma'am. Thanks for your elaborative lecture. You have explained very well about the Tridosh Pariksha and its clinical implementations. Now, I show my gratitude to get the prestigious opportunity to introduce our chairperson, Dr. Vijay Ramrao Poddar, sir. Sir has completed his BMS in 1986 from Nagpur University and MD in Kaya Chikitsa in 1990. Later on, he did his MD in Rog Nidan and Vikriti Vigyan also in 1994. Sir has written a book, textbook of Rog Nidan Kaya Chikitsa for Ayurveda learners. Your numerous research articles have been published in many peer-reviewed journals and magazines. Sir has delivered many national and international lectures on different platforms, including London, Mumbai, and Bhopal. Sir has also chaired international conference at Bhopal as a resource person. Sir is very much active in social contributions also. He has been appeared on Mumbai Doordarshan and ETV Marathi, including Akashvani, for his health guidance and question answer sessions. Sir has also participated in many health schemes which are run by government bodies and have completed them successfully. Now, I am handing over the session to respected Poddar sir for his views. Over to you, sir. Welcome. Thank you very much to all. Myself from here, the government of the following name, Dr. Vijay Poddar. Today's topic of presentation are guest lectures given by Dr. Archana ma'am. First of all, before express my some interpretation or some points, I would like to express vote of thanks, particularly GD Paul Foundation College Institute, YMT, Kerala Medical College, Kharghar, Mumbai, and particularly again thankful to Dr. Professor Archana ma'am, and who is the main organizer committee secretary as well as and coordination committee, and again thankful to Dr. Zaikini, Anil Parekar, and all. Friends, also I would like to thankful to Archana ma'am, who is the organizer here,
and coordinator who has given me an opportunity to attend this webinar. Also, I would like to express vote of thanks from my deep sense who are attending here, particularly our respectable faculties. Our respective faculties, particularly Dr. Arun, who is my student, as well as Dr. Subhash Wage, then Dr. Jyoti ma'am, who is the eminent speaker again today, that Dr. Arun and Dr. Subhash Wage, and also another chairperson, who is my friend, Dr. who are attending here the online webinar. Friends, you see, Dr. Archana ma'am has delivered their guest lecture here, which is very much informative and very much useful to our research scholars, students, and faculties too. If you not taking otherwise, say here, I would like to say, I would not like to say, but sorry to say here, we must have to aware of the technology of presentation because as of today we are pretty much as of today, yes, some problem is there, technical problem is here. My No, sir. wife No, told sir, me- you can continue. Yeah. I want to say here, our faculty, respected faculties, professors, seniors, essential to aware the advanced technology for the presentation. And but try to present here with updating and advancement of knowledge with this technical point of view. Dr. Achana ma'am is very nicely presented here. The topic Trividha Pariksha means threefold requirements for just like as a diagnostic tools. Trividha Pariksha, which is inspection, palpation, and percussion with that, and interrogation. You know very well, all of the people, there are so many investigation methods, examination methods described in Ayurveda text. There are so many. Dvividha Pariksha, Trividha Pariksha, Chaturvidha Pariksha, Panchvidha Pariksha, Shadvidha Pariksha, and so on, and Dvividha, Dashvidha, and all. Why? Because of this. Why it is so? That is a question. Somebody will ask our students, or why will ask such a question? Why we go for all these investigations? It's the question is that only all the method of investigation or examination are very particular to diagnosis, very confirm the diagnosis. So whichever investigation method, whichever the clinical examination method preferable, that you adapt there, or whenever required, whenever for the decide the prognosis or diagnosis. Friends, one thing here, Trividha Pariksha are again two types given or described in our text. Pratyaksha, Apadopdesh, Anuma. And another one is there, inspection, palpation, and interrogation. And palpation with this percussion and all. But here, inspection is sort of that. Inspection means to observe the patient how, for purpose of diagnosis, how to examine the patient by our naked eye or observe the patient by adapting or using our sensory organs, even particularly vision or eye. Police inspector in routine our lives, just see, police inspector or CBI inspector or CID inspector, what they are doing? They are doing only inspect very perfectly to the person. But with the help of their sensory organs, particularly some asking question, or many times only observing their behavior, their way of talking, their face reading and all. It means
best investigator, best inspector can diagnose, best inspector, police inspector can decide who is the criminal person, who is the. Similarly, here, physician can diagnose if we enable or efficient. When we see the number of patients in our routine IPD or OPD level, then we will go. Just many percent or many Ayurvedic doctors are only diagnosed at the help of inspection. You know very well, there are so many examples are here who are diagnosing the patient only observing the body language, only observing the face reading and eye and also swelling and all. Just you see some examples. You know the mutt or monastery, that is called like just supposed to be Maharaj, Pujari, Molavi. These persons are also diagnosing the persons. These people are diagnosing the persons, or many times disease, psychological disease even though, or they people are diagnosing in their mutt, mandir, or many of the patients came there and they are observing from distance, from far away. Then, but only they can inspect, they can enable to observe the patient even by their behaviors, talking, walking, and social misbehavior things. This is the importance of inspection, you know. So we people must have these new things, new diagnostic tools which are available in our medical field today. Even suppose there are nowadays so many various advancements are coming and diagnostic tools are coming or available in our medical field, which are advancement of these things for observation, inspection or manual observation. Or suppose we take example ECG. What is that exam? What is the method of exam? What type of examination? That is the inspection after all. That is the observation after all. We can observe the patients of cardiac disorder or patients of Van disorder in the way of very particularly observation of the graphical presentation of the cardiac cycle and their changes. And on the help of that, we can diagnose the disease by observing these things. So inspection has no limit. So we can adopt the many of the diagnostic tools for the purpose of inspection. These advanced instruments are also developing nowadays from the Faculty of Biomedical Instrumentation today. You know, the USG, EEG, and CT scan, MRI, what is this? Or X-ray, radiology are the very advancement phase of the inspection. So these things are very important to understand how we can adapt these method of examination, method of parikshan in our routine OPD level, IPD level, or whenever required for the diagnosis and decide the prognosis, right? Then many times, you know, the dosha dushta samurchana. And so pathological lab, we can observe rasa, rakta, mons, these 7 dhatu components as their higher level, lower range, higher range, and abnormalities of that in our pathological lab. That is again manually we can observe by our eye. Physiological investigation, hematological investigation, or histopathological investigation all investigations are nothing but inspection, and manually we can observe, we can decide on the help of this, we can diagnose the disease. Even histopathological investigations are nothing but, even microscopic investigation is nothing but observation or inspection, and on the basis of that, we can decide the diagnosis of it, right? Then many times, even those factors, vata, pitta, and kapha, and their abnormal status or abnormal things
regarding this, we can observe in our lab. In our, even by the help of lab, in lab, or as well as we can by the help of instruments, several instruments. That is supposed to be most of the barium solid X-ray supposed. We can observe by where exact Srutodushti is there, where exact even endoscopic investigation method is also inspection. I meant to say, and then kapha and pitta and their range, kapha prakopa and kapha vriddhi or kapha aggravation and pitta aggravation, we can observe in pathological lab by the help of several pathological investigation. Right? These things are very important to see with this presentation. And one more point is here: questionnaire, prashna pariksha, the third one examination method of examination, or third one method of correction, which is very important because you know very well all of these people. The questionnaire or collection of the question concerned with the diagnosis, concerned with the disease. That is because of what? That is because of for the diagnosis of perfection of the diagnosis, for decide the prognosis. And you know, the ask the question to the patient is an art. Many people only asking the question to the patient. By the help of this, even on phone call, we can diagnose the disease and go for the further line of treatment according to their phone or talk. Right? So questionnaire is also an important examination, clinical examination point of view is very important, but we must have to ask relevant questions or for purpose to detect the initial cause of disease or concerned with the etiopathogenesis. That is the importance for us. The physician must have to ask only questions which are etiopathogenesis point of view, detect the etiopathogenesis or understanding point of view for understanding of the pathogenesis of the disease. So questionnaire is a very important thing, as well as with this another examination. Every investigation, examinations, or any corrections are play an important role at their level whenever required. Now, at their level has importance at their level for the diagnosis. But physician can decide, physician can prefer, physician unable to or attempt to prefer whichever the investigations method or examination method is important, and whenever required and whenever we can ask some relevant question. This is a very important thing for us before undergo the clinical examination of the patient. And one more thing I would like to ask here. Ayurveda text describes many investigation method, you know, but why we are describing many more method of investigation? Because of for perfectness of diagnosis. For Ansha Kalpana, you know, that is to the point. We can refer whenever the which investigation method is preferable as per the even patient, as per the very specific patterns of the disease, as per there. Now which questions or which method of examination is preferable, we can prefer there. Now, and only they are describing many more method of examination are because of this. For if not possible to diagnose within supposed to be some examination, then we will go for the another. We will go for the then alternative method of examination. Similarly, here we can adapt, we can prefer whichever the method of examination is. You know, nowadays many of the advanced investigations or examination methods are innovatively known today, just like as a narco test. Narco test is what exact? Narco test is a very particular test for not visualized waves observed by the help of observation of the waves or thinking waves or easy. That is one of the example of that.
we can observe, we can inspect the graphical presentation on paper. How the patient is there, and what is the diagnosis, what is the diagnosis of that, what type of disease of psychosomatic disorder or whatever the disease there. Then, as on today, we people are very important to say here point. I mean to say, we faculties are very important to see what are the advancements for the examination we can adopt whenever the necessary. And at last, but not least, but it is very important, just you see, whichever the method of investigation are preferably, that particular reference has given in our Ayurveda text, Ekam Shastram Adhyano na Vidyat Shastra Nishyam, and Tasmat Bhushrutam Shastram Vidanyat Vikasata. Not depend on only our text. Many of people are just teaching there as per the text as usual, as very particular by the help of text. But we are in our field, medical field, we are treating the patient, and we people must have to diagnose, we must have to very perfect way and differentiate the patient and apply. So, which the instruments, which investigations, method of examinations are applicable, that we have to use in our daily today or practicing time. Thank you very much. If you have any questions regarding this, you can ask our guest speakers who are here, and thankful again. I am very much thankful to all, and very much thankful to GD Foundation organization, GD Foundation Webinar Organization Committee. Particularly thankful. Thank you very much. Thank you, sir, for your interesting reviews. Now I will hand over the session to Dr. Anil Parekar, sir. Thank you, Dr. Shivani ma'am. Have a good afternoon, all of you, and a great day. I would like to present a शायरी for all of us. हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन ही जाएगा, देखकर तुझको काफिला खुद बन ही जाएगा। With this शायरी, I welcome today's guest speaker for the third session, Dr. Jyoti Megdambar Madam. Currently, ma'am is working as Associate Professor in the Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan at Arepuda Medical College, Wali, Mumbai. Ma'am is having total 18 years of teaching experience. Also, she is a PG guide as well as a PhD guide. Ma'am has been conferred with various awards like Social Health Award for the outstanding services provided at Lokmat Sakhi Sanman function by newspaper Lokmat. Also bestowed with Hirkani Ratna Award by Vanita Bahuvikas Mahila Manch, Nanded, for outstanding work in breast cancer awareness program and campaign. Recently, ma'am was awarded by Dr. APJ Abdul Kalam Award for Teaching Excellence in 2019 from Marina Labs, Chennai, Bangalore. Also awarded by Marathwada Bhushan Award by Mahila Mandal, Vanita Vikas Bahudeshya Mahila Mandal, Nanded. Ma'am has been honored with Certificate of Honor and Appreciation by Government Ayurved College, Nanded, for outstanding contribution in organ donation campaign. Also, ma'am has also participated in various research activities. Ma'am has invited as a guest speaker and delivered more than 20 guest lectures on breast cancer awareness and screening campaign since 2013. Ma'am has published 13 articles in various newspapers like Lokmat, Sakal, Dainik Jai Bharat.
also published more than 20 research articles in various national and international peer-reviewed journals. Ma'am has delivered keynote on breast cancer and Ayurveda research at a national conference on dialogue between Vedic era and modern sciences (BHU) organized by IIT. Ma'am is working as editor for the STM Journal and Journal Pub, named a Journal of Ayurveda Research, Science, Yoga, and Naturopathy. Ma'am has been invited as an organizing member in various conferences and also as a chairperson and co-chairperson in various seminars. Ma'am is a member of National Breast Cancer Foundation since 2019 from Frisco, Texas. Ma'am has also published a handbook on key points in pathology published by Chokhamba publication and a Ladha Stana Cancer She, these books. Worked as an active member in various health camps. Welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. Hello. 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 Yes, ma'am. You are audible. Yes, yes. I'm audible. Okay. Yes. Okay. Thank you very much, Dr. Anil, for my introduction. And really, it's my great privilege to talk on this topic in front of all of you. And basically, I should like to thank the organizing members as well as your HOD, Dr. Archana Gharge Madam, as well as total team of your organizing committee. I should thank that you have given me this wonderful opportunity to present my topic on this platform. So let us start with my presentation. I will share my screen here. Yes. Hello. Yes, ma'am. Just a second. Yeah. Yeah. Is it okay, Dr. Anil? Yes, ma'am. Is it? Yes, yes, yes. Yes, yes. Slides Yeah. are visible Now, and you're audible. yeah. Now let us start with my presentation. The topic of my presentation is understanding basic hematology for the diagnosis. Now, what I'm going to cover in this presentation, I'm going to cover about diagnosis in short. What is hematology? It is also in short, importance of hematology, as well as basic hematological tests, the names of hematological tests, then visual description of RBC morphology, as well as different blood smears for the diagnosis, and how to report it actually. This is the main topic which I have this presentation. Then importance of investigation in Ayurvedic practice and a future scope and research. These are all the points I'm going to cover in today's presentation. Now, which are the diagnoses will be covered by the presentation. That is mainly iron deficiency anemia, then megaloblastic anemia, sickle cell anemia, thalassemia, aplastic or hypoplastic anemia, hemolytic anemia, and sideroblastic anemia. Now, coming with the introduction, first of all, I just share one thing that when I have invited by Dr. Chitra, that can you talk on the topic regarding diagnosis? Then first of all, I asked her, who are the audience? Then Dr. Chitra said, my students, PG, PhD, as well as UG students are the audience. So my presentation is mainly, I have focused only and only for the students, because this is a very basic presentation, because hematology is such a huge topic. It cannot be covered in 1 hour only. So in that hematology, I have taken only one basic part of it, that is peripheral blood smear. So coming towards the introduction of hematology. Now, hematology is a diverse medical discipline encompassing the development of congenital disorders associated with red blood cells, white blood cells, and coagulation factors. Hematology tests such as complete blood count and peripheral blood smear analysis commonly ordered tests in clinical laboratories, and sources of error can be occurred while sampling, transporting, testing, processing. Visualization of the cells under microscope is very important for understanding the diagnosis. Here, I just want to say that
hematology is a very important branch in the modern science, because when we fall in the love of cells, just 1 minute, in 1 minute, I want to share one thing, that while we are completing our postgraduate course in Tilak Ayurved Mahavidyalaya, at that time, we came into contact with Dr. Hematologist, well-known hematologist, Dr. Marathe sir. He's practicing nearby Apollo Theatre, and we always labs and very much things we learn from them. So the cells basically, which are the cells basically important for hematology or to diagnose the hematology, at that time we learn from them. And from that day, I fall into the love of cells. And after that, I started my study regarding pathology and hematology. So I must thankful Dr. Marathe sir as well as my husband, Dr. Vinayak Nonare sir, that I came into this field and I started this pathology from that time. So next, what is the need of the study? Full screen is visible, Dr. Anil? I think full screen is not visible. Some Yes, ma'am. words are, it is visible. Madam. Okay. Yeah, that is What is the need of the study? Actually, UG students as well as PG students of Rognidan should be acquainted with all the things in pathology. Means it came to know that while I examine or while I came in in some institutes, it is seen that many of the students, UG students as well as PG students, are not acquainted with basic things of pathology. So while doing the clinical Ayurvedic practice, the Ayurveda students need to understand the reports and need to make the correct diagnosis, even if plan for the Ayurvedic medicines. And evidence-based practice is need of the hour, I think. So for the students, basically, I have chosen this topic of peripheral blood smear, which is the small topic in hematology. Now, which are the aim and object of my presentation? So the aim and objects are to study the basic hematology for the diagnosis, to study the basic things in hematology, especially peripheral blood smear, and to observe and report the peripheral blood smear independently in pathology lab. This is actually my motto for postgraduate students who are studying or who had studied post-graduation in Rog Nidan Vikriti Vignan department. Now at the end of presentation, what I think that at the end of my presentation, the students might be competent in caring for common presentations in hematology and can advise the patient for further consultation. The students can learn the fundamentals for managing anemias, integrate best available evidence into Ayurvedic practice, and the PG students can report the blood smears easily. This is my motto of today's presentation, and I think it may be covered. This is my opinion actually. Let us see what happens at the end of presentation. Now coming towards the diagnosis, we'll start by the diagnosis. Now what is the diagnosis? The word diagnosis is broadened by the definitions like clinical diagnosis, cytological diagnosis, differential diagnosis, pathological diagnosis, and radio diagnosis. Now what is mean by clinical diagnosis? As we all know that clinical diagnosis means the clinically how we check our patient and which are our findings, how we are going to do the general examination of the patient, finding we got from that general examination as well as systemic examination of the patient. Now, these all the findings, we are going to take it together for the confirmation of the disease. So then only the clinical diagnosis is made. Now about cytological diagnosis. As we all know in the word cytological, cyto, that is the cell. So the cells are very, very important for the diagnosis. So cytological diagnosis is nothing but where we are observing the cells under microscope. I mean to say each and every cell under the microscope, when we are observing that by all the angles of the slide, and at that time, what the objects of cells are there, either the cells are normal, either the cells are abnormal, or either there are any abnormalities or anything special looking in the blood smears, and then only we are
made the diagnosis that is called as a cytological diagnosis. So the cytological diagnosis depends on only and only upon the cells. Now coming towards the differential diagnosis. Now what is mean by differential diagnosis? That is also, we all know, we are acquainted with this word, that is differential diagnosis. It is nothing but when the signs and symptoms are together with the diseases, and at that time we are going to differentiate the suspicious signs and symptoms from another disease, that is called as a differential diagnosis. And this differential diagnosis is very, very important to do the confirmatory diagnosis or final diagnosis of your patient. Then pathological diagnosis, coming towards the pathological diagnosis. Now this pathological diagnosis is nothing but the diagnosis depends on the investigations of the patient. Now 70% diagnosis we are going to do, or we always do, by the clinical diagnosis. But apart from that, the pathological diagnosis plays very important role in the diagnosis. So pathological investigations plays very, very important role in the diagnosis. Now we have seen since last 1.5 years in COVID that many of the investigations like D-dimer or CRP, these are the pathological investigations. And we have done the pathological diagnosis of COVID patients depends on that. So the role of pathological diagnosis is very, very important in such cases as well as many of the clinical conditions. Then coming towards the radio diagnosis. As we all know, radio diagnosis is nothing but where we are, the radio means where are the rays? Rays are responsible for that diagnosis. Means radio diagnosis means where we are going to see the ultrasonography, then CT scans, then MRIs, HRCT. HRCT is the common word since last 2 years we are heard that the diagnosis depends on confirmatory diagnosis. Always we are acquainted now in 2 years, we are acquainted regarding HRCT, what is the score, even layman also acquainted with that, what is the score of your HRCT, and then it is possible to make the diagnosis of the patient as well as to manage the patient. Now, what is the importance of diagnosis? This is very, very important. Now, diagnosis helps to understand the etiopathogenesis of disease. It helps to plan the treatment as well as the disease, and it helps to understand the prognosis, morbidity as well as mortality. So, the diagnosis is very important for the treatment. Now, why the diagnosis is essential again, just we'll see in 2 lines. Diagnosis sets approach towards the appropriate treatment. Of course, if the diagnosis is incorrect, we cannot manage the patient. We cannot give the good treatment to the patient, or patient cannot be healed by inappropriate diagnosis. So the confirmatory diagnosis, appropriate diagnosis is very, very necessary in today's era. Diagnostic process helps for differential diagnosis, as we all know it. Then accurate diagnosis is necessary for the research foundation as well as evidence-based practice. Here, I just bold this sentence because we are working or we are practicing in today's era, that is in this modern era. While we are practicing here, the evidence is very, very necessary. We always say that Navayas Loho I have given to my patient and the HB is increased, or I am given Dhatradi Loho to the patient, or any Punarama Mandur Kalpa to my patient, and HB is increased. But apart from that, only the HB is increased. I think that if we have the evidence of it, then and then only this evidence-based practice can be happen very much well. So this is the main thing what I want to say. Then helps in evaluation process of recovery and deterioration. This we all know. Now coming to the main point, that is what is hematology. What is hematology in short? Hematology is the science or study of the blood and blood forming organs and blood diseases. In the medical field, hematology includes the treatment and malignancies, including hemophilia, leukemia, lymphoma, and sickle cell anemia. Hematology mainly focuses on lymphatic organs, bone marrow, and diseases of blood.
This is the branch of internal medicine that deals with the pathology, physiology, etiology, diagnosis, treatment, prognosis, and prevention of blood-related disorders. So this is all comes under the hematology. And hematology is the special and main branch of the modern science because many of the diagnoses are confirmed by the hematologist. Now, importance of hematology to diagnose and manage wide range of benign and malignant disorders of red and white blood cells, of course, that we are going to see. Then platelets and the coagulation system in adult and children. Not only erythrocytes, leukocytes, and hemoglobin are also important, but knowledge of morphologic characteristics of dried and stained film gives the satisfactory diagnosis. As earlier I said that sources of error can be happen in this field or while the sample, while the has taken, how the sample is going to process, how this transportation of the sample has done. So these all the conditions are very, very necessary for the confirmatory and good diagnosis. But apart from that, I can say that apart from the cell counters, apart from the values of cell counters, what machine gives to us, that is the diagnosis not depends only and only on that values. Because what is our duty here is to examine the blood smear, to examine the stain film, to examine the cells, to see the keen eyes, and then only the satisfactory diagnosis happens. And the confirmatory diagnosis happens only and only by examining the peripheral blood smear. Now, which are the hematological tests? We just take one review of the hematological tests. We are not going into the details of all the tests, but we are just taking, just the student should be acquainted with the test of the hematology that I'm going to deliver. CBC, that is complete blood count. As we all know that CBC report or complete blood count report, it is done by only and only the cell counter. There are 3 parts of cell counter, 5 parts cell counter, all the things are there. So CBC means complete blood count and all the values given by the cell counter. Now, PBS, that is peripheral blood smear. Peripheral blood smear. Now this peripheral blood smear, only this thing we are going to see in our today's presentation. Only I focused my presentation on peripheral blood smear because this is very, very important for the diagnosis in hematology. Now WBC, these are white blood cells. Basically, blast cells are much more important in the hematology. Then hemoglobin electrophoresis. This hemoglobin electrophoresis, this is mainly the part which is important for the to rule out thalassemia as well as sickle cell anemia. We cannot diagnose thalassemia and sickle cell anemia only and only by peripheral blood smear. So hemoglobin electrophoresis is very, very important in hematological tests. Then reticulocyte test. This is also a very important test in some blood smear or in some anemias. Sickle cell test, as I earlier said, that sickle cell test is very important. But when we have to diagnose that this is sickle cell anemia, we have to go through the hemoglobin electrophoresis. Then iron assay. This is again very good investigation to rule out or to confirm the diagnosis that either the patient is suffering from iron deficiency anemia or anything else. Then ESR. Of course, this ESR is not having any diagnostic value, but ESR is having only and only prognostic value, but it comes under the hematological test. So I have included this ESR under this chapter. Then osmotic fragility test. Now, what is mean by osmotic fragility test? This osmotic fragility test is nothing but here we can say that whether the red blood cells are more likely to break down. When the more breakdown of red blood cells happen, then osmotic fragility test gives us the different diagnosis. So this osmotic fragility test is very important. Now, coagulation studies. Under these coagulation studies, I think
The D-dimer tests are also included in this coagulation studies because this investigation is nothing but the protein fragments of blood clots gets dissolved in the body and how much the value of it that we are going to see in that coagulation studies. And again, in this coagulation studies, activated prothrombin time, only prothrombin time, as well as partial prothrombin time, APTTK. These are all the studies which are comes under the coagulation studies. Now, Holmes test. Holmes test, it is again very, very important test, and it is used to detect the antibodies which act against the surface of red blood cells. So Coombs test, it is again very, very important test. Blood group, this we all are acquainted with this blood group. So I'm not going to see in details of that. Then G6PD. Again, this G6PD is very important investigation where red blood cells are breakdown in response to certain medication, infection or other stresses. In this condition, usually G6PD values are goes up and down. Then malaria, of course, we all are again acquainted with this word malaria. But here I just want to say that the malarial parasites, where we are going to diagnose that malarial parasite, that is in RBC. In the RBC, that Plasmodium parasite goes in that RBCs, and then only we can diagnose that malaria. Means Plasmodium parasite invade the red blood cells by trafficking the parasite, and then only we can diagnose the malaria. Then again, see, it is the main investigation, special investigation regarding hematology. Now, what we are going to study today, that is peripheral blood smear. It's okay, but that peripheral blood smear guided us to go up to the diagnosis. That is not the final diagnosis, but it guided to go up to the final diagnosis. But bone marrow biopsy, very important to detect the type of anemia. So not only peripheral blood smear gives us the diagnosis of anemia, but apart from that, we should send our patient for bone marrow biopsy if the anemia is not treated by us. Then FNAC again, that is fine needle aspiration cytology. This also comes under the hematological test. Here, fine needle aspiration cytology is nothing but it is the very simple, rapid, and easy test, and which can be done on OPD base also. But here, from that cells, I think some disturbance is there, sir. Dr. Anil. Hello. 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 Yes, ma'am. Am I audible? No? Yes, ma'am. Yeah, there is some disturbance, I think. Then FNAC, that is fine needle aspiration cytology. This fine needle aspiration cytology is especially we have done this cytology only and only for looking the cells. Either the cells are under benign condition or either there is a neoplasm. Then for lymphadenopathy also, this FNAC can be done. To rule out the various cancers, FNAC is very, very important criteria, very, very important investigation. Now, looking for the area. This is again very much important investigation for in the hematology. Microfilaria means, as we all are acquainted, I think microfilaria means the blood collection we are going to do, or we done this blood collection at 12 o'clock in midnight, and then at that time the blood smears can be done, and then the special stains are used, and then only the filarial parasite comes under the microscope and comes in that stained film. And then last not least, it is D-dimer test, and this is very, very important test, D-dimer test. And since this 2 years, 1.5 years, we are very much acquainted with the D-dimer test. So I will not talk much on the D-dimer test. Now, today, what we are going to see, this is our main part. Now, what we are going to see, visual description of RBC morphology. Now, some special
special special special synonym or terms, terms. The special terminologies the student should see first of all. The normocytic. Now, what is mean by normocytic? Normocytic means the cells which are of normal size. Macrocytes, the cells which are of large size. That is the RBC diameter. We all know. Apart from that diameter, when the cells are huge, that is called as a macrocytes. Macrocytes, that is abnormally small cells. Anisocytosis, that is variation in the size of cells. Poikilocytosis, that is variation in the shape of cells. Normochromic, that is cells are normal, cells are of normal color. Hypochromia means decrease in staining density of the cells, usually due to lack of hemoglobin precursors, especially iron. Then polychromasia, variation in the color of the cells, usually large juvenile bluish staining. Polychromatophilic macrocytes. And annulocytes means this is the extreme form of hypochromic cells with only a thin rim of hemoglobin. These all the terminologies we are going to use while reporting the smear, while reporting the peripheral blood smear. So students, you should be acquainted with all these terminologies. Now I should start about the peripheral blood smear. Now, first of all, we should see that how this normal smear, peripheral blood smear looks like. So this is a normal peripheral blood smear. Here you can see here. Today, I just want to focus on only and only RBC. If time permits and if again I will be invited, then only we will focus on WBC. But today's lecture or today's presentation, today's presentation, I will focus on only and only RBC. In this blood smear, here, these are all the RBCs. These are all the RBCs. These are platelets, which are very, very small. These are platelets. And this is one WBC. Okay, this is lymphocyte. This is WBC. But we are not going to focus on WBC today. We are focusing only and only RBCs. So this is the normal peripheral blood smear. Now, I'm not going to tell in details what is staining and all that. You can read it from the books. But how to report the peripheral blood smear or how to report the microscopy of this peripheral blood smear. First of all, if the blood film is like this, in all the angles, from the end, you have to start for reading the smear. Because at the beginning or at the head point, there are very much RBCs gathered together. So we cannot start from that angle. You should start for the reading of the smear from the tail portion. If the tongue-shaped smear is there, that will be the ideal smear, tongue-shaped smear. And then we can start from the just end portion of the smear, that is between the body of smear, we can read. Then what will be my reading if the smear is like this? Now, the first sentence in your report is that the normocytic, normochromic cells are seen. In your report, you can write, if this type of smear is there, you can write that normocytic and normochromic means normal color of the cell is there and normal chrome of the cell is there. Normocytic means normal cell, normochromic means normal color. Here, there is no hypochromia seen on the smear. The what I can say, the central pallor of the RBCs, it is also not there. Central pallor means here, where my arrow is, here we can say the central pallor, but here is not the central pallor. The RBC is normal. So here, normocytic RBCs are seen on the smear. This should be your first sentence while you are going to report the smear. Okay. Now, second one thing, I will not comment on the WBC because I have not covered WBC in this slide. Okay. So that we'll again see in the next session or in next lecture. About platelet also. If the platelets are on an average, if hundreds are platelets are looking in one field of the smear, then we can say that the platelets are adequate. And if the platelets are less in number, we can say that the
there is inadequate platelet. But again, I am not commenting upon the platelet because I'm not focused on the platelets and okay. So about only RBCs, your first sentence in this slide for the report or for remark is normocytic and normochromic cells on the smear. Okay. Now, second one. Now we'll see the iron deficiency anemia, which is the common anemia in our today's practice. This is the nutritional deficiency anemia also. So iron deficiency very common. When I was practicing in Nanded, we have gone through the OPDs and IPDs also, but 2 HB and 3 HB, 4 HB, 6 HB also was very common there. 6 HB, I have, when we are PG in Tilakarved College, at that time, 6 HB was very less according to us. But when I have practiced in Nanded, at that time, 2 and 3 HB in Nanded and periphery, it was very, very common. And we are really very much shocked how the patients are looking and how the patients are living. So iron deficiency anemia is very, very common anemia in our country, I can say, in our country. So here differentiate the normal blood smear as well as the iron deficiency anemia smear. Now, here is normal blood smear where you can see that the RBCs are very, very normal. There is no any microcyte. There is no macrocyte. There is no anisopoikilocytosis. Means anisocytosis means what? Change in the size of the RBCs, and poikilocytosis means change in the shape of the RBCs. So here no any change in the shape of RBC and no any change in the size of RBC also. So this is normal blood smear. Now, what is the microcytic hypochromic anemia? Here we can see that the microcytic cells are there. Just a minute. This is the microcyte. Where my arrow is, this is the microcyte. Because this microcyte is far different from this normal cell. Are you getting my point, students? This is microcyte and this is normocyte. Here, the target cell is also looking where the RBC is, and in that RBC, where the dot is looking, that is called as a target cell. Here you can see again the teardrop cell. Teardrop means अश्रूच्या थेंबासारखी दिसत असलेली cell. Tear means themba, that is drop. So this is the teardrop cell. So basically, you just focus on this cell only. This is the microcyte. This is the microcell, means the diameter of the RBC, it is very, very less. Now, what is meant by hypochromia? Now, here in normal blood smear, you can see that no any pallor is there. Okay. And here you can see that central pallor is increased, right? The RBC is looking whitish in color. The cell is, the color is very much decreased. So you can report in that smear that these are microcytic and hypochromic in nature. This is your remark for reporting. Okay. This is the iron deficiency anemia. Then again, which are the other cells you found on that blood smear? That also you have to note. Okay. Here I can note that teardrop cell. Where is the arrow? Here is the arrow. Teardrop cells are also looking. So teardrop cells are also found on the smear. This should be your sentence for reporting, as well as elliptocyte. We can see here. Here, elliptocyte is also there. That can also found on the smear, and you can report it as well. Then target cell. This is target cell. So your finding should be there that target cells are found on the smear. Okay. So after all, the total reporting of this smear is, you can write on your pathological paper that microcytic hypochromic cells are seen, teardrop cells are found on the smear, elliptical cells are found on the smear, and target cells are found on the smear. This should be your report regarding microcytic hypochromic anemia. Okay. I think you are getting my points. Okay. Now coming again
with the other forms of iron deficiency anemia. See here, the normal just these all the cells are very, very small. Okay, here also you can see that very, very small cells are looking, but only the staining is different in both. This is simple Leishman stain. This slide is of simple Leishman stain and the different stain used. So here WBCs are also found in this smear, but all the cells are looking small. So this is the typical and ideal picture of microcytes, which are the diameter of RBCs is small than the normal diameter of RBC. As we all know that normal diameter of RBCs is 7.2 to 7.55 mu. But if the diameter is less, that is called as a microcyte. Now coming towards the next peripheral blood smear, that is megaloblastic anemia. Okay, so here again, the normal blood smear for the comparison, and here again, the megaloblastic anemia picture. Okay, now here you can see also the normal, also you can see here, but mainly the in megaloblastic anemia, which cells are found, the macrocytes are found mainly in the megaloblastic anemia, right? Macrocytes means the diameter of the RBCs is very much large, and that is called as a macrocyte. This cell is very much large from this cell, from this cell, from this cell. This is normocyte, and here macrocyte. So this macrocyte, it means the diameter of the RBC is very much large. And one more thing, you have to keep in mind that while diagnosing the megaloblastic anemia, you should also focus on the WBCs, right? So WBCs are seen as hypersegmented neutrophils. Normally, the WBCs or normally neutrophils have 2 or 3 lobes or up to 5 lobes are okay. But when the lobes are increased, when the segments are increased, at that time we can say that the hypersegmented neutrophil is found on the smear. So what will be my report regarding megaloblastic anemia? And one more thing also, I want to tell you that in megaloblastic anemia, because of this is the part of vitamin B12 as well as folic acid deficiency anemia, and again this is a part of pernicious anemia, and you all know that pernicious anemia is nothing but it is due to the vitamin B12 deficiency, because vitamin B12 it is in the gastric juice, and so that the vitamin B12 loss is happen in this megaloblastic anemia. As this anemia is due to the vitamin B12 and folic acid deficiency, so many of the RBC abnormalities we are found on the peripheral blood smear. So don't forget to report that. Now again, this is the very good picture of megaloblastic anemia. Here you can see that the hypersegmented neutrophil again. Here the lobes are enlarged. The lobes are enlarged and in number also. Okay. Here you can see the teardrop cell. This is typical teardrop cell. Ashrucha thembasarke. This is teardrop cell. Here hypersegmented neutrophil. You can see here macrocyte. You can see this macrocyte, which is this is normal. This is macrocyte. The diameter is increased. This is hypersegmented neutrophil. Okay, some normocytes are also looking in this smear. So what will be your final report regarding megaloblastic anemia is that macrocytic hypochromic cells are found. Then teardrop cells are found on the smear. Ovalocytes or oval-shaped cell. This is ovalocyte. Oval-shaped cells are found on the smear, as well as any other abnormality. If you have found on the smear, you can note it compulsory on the smear. And regarding WBC, the reporting regarding WBC, you should not be forget about the writing of hypersegmented neutrophils seen on the smear. Okay, so here your complete diagnosis of megaloblastic anemia. Now this is anisocytosis. Now what is the anisocytosis? Because this is the terminology which you should write while writing the report of peripheral blood smear. Now anisocytosis is nothing but
It is when there is a variation in the size of the RBCs, that is called as anisocytosis. Okay, so variation in the size of RBCs बंद means कर रहे थे हे. here you can see the anisocytosis. अरे Here, त्या teardrop याला cells. समृद्धला फोन कर, त्याला विचार. Hello. तुझ्या फोन मध्ये नाही का? Dr. Anil, please mute all the audience. Hello. This is teardrop cell. This is teardrop cell. Then here microcyte is also seen, macrocyte also seen. Here again you can see the teardrop cell. This is hypersegmented neutrophil. Here ovalocyte is also seen. Here again ovalocyte is seen. This is ovalocyte. This is again small cell, that is microcyte. This is microcyte. Here I just want to say that when many abnormalities of RBCs you are seen on the peripheral blood smear, many of the times that diagnosis comes towards the megaloblastic anemia, that is vitamin B12 folate deficiency anemia. Okay. Now coming towards the poikilocytosis. Now what is meant by poikilocytosis? This is when there is a change in the shape of RBCs. At that time, this terminology should be used. That is poikilocytosis. Here you can see the shapes are changed. Normal RBC is not seen in this smear. Here the cells are, these are acanthocytes, right? These are acanthocytes. जे काटेरी आपल्याला दिसतात. काटेरी cells ज्या दिसतात. These are acanthocytes. All are the acanthocytes. Here you can see the pencil cell. Here is the pencil cell. Okay, so the shape of the cells are very much changed. This is called as a poikilocytosis. So again, while reporting your smear, you can write that anisopoikilocytosis is seen on the smear. If your slide is looking like that, if you have seen all the cells change in shape as well as change in size, then you should report the thing on the report, right? Now about ovalocyte and elliptocyte. This is the typical picture of ovalocyte. And this is the typical picture of elliptocyte. Elliptocytes means cigar-shaped cell. This is elliptocyte, okay? And this is ovalocyte. So this is the difference between ovalocyte and elliptocytes. If these cells are found on the smear, note it on your report. Don't forget to note down any of the abnormality of the cells, because our diagnosis mainly depends on that cells to write any of the cell. Now coming towards the reticulocytes. These reticulocytes, these are very rarely we can observe on the peripheral blood smear, but these reticulocytes we can found in the RBCs. Reticulocyte means what? In RBCs, the fragment of the RBCs or the DNA material in the RBCs, it comes together and it is looking inside the RBCs. That is called as a reticulocyte. Okay. So if these reticulocytes are found on the smear, you can note that reticulocytes are seen on this smear. Now regarding sideroblastic anemia. This is sideroblastic anemia. Now this smear is again very different from the other smears. Now sideroblastic anemia, it is the anemia where it needs the special stains. I think special stains means methylene blue. Usually we are using Leishman stain as well as field A and B stain. But for the diagnosis of sideroblastic anemia, we should use the special stain like methylene blue or brilliant crystal blue. So if we use these stains for the staining of blood smear, then and then only this type of cells will found on the peripheral blood smear. This nuclear material is looking in the RBCs. You can see it. This is the nuclear material. This is the nuclear material. This is also nuclear material. If such type are there, then such type of cells on the smear, then and then only this sideroblastic anemia, we can guide it that
the sideroblastic patient is suffering from this sideroblastic anemia. Now, sickle cell anemia. You all know about this, that the cells are the shape of the cells. It is sickling of the cells happening. This is typical sickle cell. This is also typical sickle cell. This is one of the target cell. This is again RBC. This is all the RBCs. Here again, somewhat sickle cell, and this is again the cell, but it is not completely sick. This is one of the WBC. So sickle cell anemia, if the patient is suffering from, and if this is the blood smear in front of us, this is the blood smear of sickle cell anemia, but my dear students, we cannot confirm, we cannot diagnose, we cannot give the final diagnosis that the patient is suffering from sickle cell anemia, because here one thing should be learn in mind or keep in mind, that sickle cell anemia needs further investigation, and that is nothing but the special investigation like HB electrophoresis or HPLC, high pressure liquid chromatography. So after the electrophoresis, HB electrophoresis, after HB electrophoresis, the diagnosis of sickle cell anemia confirms. But this is the smear where we can make the provisional diagnosis, or we can advise your patient to go for the bone marrow biopsy, to go for the HB electrophoresis, or to go for the HPLC. But this is the provisionally we can make the diagnosis of sickle cell anemia. Okay, now coming towards the thalassemia. Now again, thalassemia is not ruled out only and only from blood smear. This is also keep in mind. That is, thalassemia we cannot diagnose only and only from the blood smear. It needs this special investigation, like again what I earlier said, that HB electrophoresis and bone marrow biopsy. But when the patient comes to us with the low percentage of HB like 2 and 3, the history of blood transfusion, and the smear is like this, means what? There is moderate to severe anisopoikilocytosis looking in this film. Okay, moderate to severe anisopoikilocytosis is looking in this film, as well as the vacant RBCs are seen. Vacant means what? Vacant means the central pallor of RBC is much more increased. It is severely increased. And if such slide is in front of you, if you are going to report it, then one sentence you should not forget to write on the report, that is the central pallor of the RBC is increased. Moderate to severe anisopoikilocytosis is seen on the smear. Target cell is seen on the smear. This is again this cell, that is elliptical cell, is seen on the smear. So when moderate to severe anisopoikilocytosis is seen in every report of that patient, if you are treating that patient for anemia, you don't know that the patient is suffering from anemia. But if you are given the treatment of anemia to that patient, and if not treated, again patient comes to you for after 6 months, after 1 year, and again the smear looks like that, then 101%, if by vitamin B12, by minerals and every other hematinics, if the patient is not treated, then send the patient to the higher center for bone marrow biopsy, means the patient is suffering from any other type of anemia. And if such smear is in front of you again and again of that patient, means your patient is suffering from other anemia, send your patient to the higher center, do bone marrow biopsy, and again do the further treatment. Okay, I think you are getting all these things. Okay, now coming towards the hemolytic anemia. Just 1 minute. Now hemolytic anemia. Hemolytic anemia means, how is the smear? The smear is somewhat different from normal smear, right? Here one WBC is looking and other are all RBCs. But
to rule out the hemolytic anemia or to guide the hemolytic anemia, these are the different cells. This one cell, this is the cell, this is the cell, this is also, and this one also. Now, these are the different cells from normal cells. And which are these cells? These are called as schistocytes. Schistocyte, SCH, schistocytes. So these cells are normally not found on the blood smear, but when your patient is suffering from hemolytic anemia, then such type of smear or such type of cells are found on the smear, and that is called as a schistocyte. When many of the cells are found on the smear, each and every angle you have to cover while reporting the smear. Then when you found this schistocyte on the smear, then 101%, this is the guide for you that your patient is suffering from hemolytic anemia. But again, keep it in mind that this is not the confirmatory diagnosis. This is the guidance towards hemolytic anemia. Again, here you just send your patient for the biopsy, bone marrow biopsy, or to the hematologist for the confirmation of the disease. Okay. Now again, one more picture of hemolytic anemia. More clues from this blood smear we'll get. This is schistocyte smear. Here, microangiopathic and hemolytic anemia. Here, this is the schistocyte. Here again, schistocyte. And some cells are normal and some are microcytes. Here again, you can see that microspherocytes. These are the cells. This found in autoimmune hemolytic anemia. And again, here sickled red cells. Here sickled means sickling of the cells are happen. And this is the sickle cell. This is sickle, this is sickle, this is sickle, and this is sickle. And one, again, these target cells are also looking in this smear where there is a purple dot in the RBC. Okay, so these are all the smears where you can differentiate the smears from the normocytic normochromic anemias. Now, how these reports are useful in clinical practice, this is very important thing, or what is the main thing from this presentation. You can say that this is the home takeaway message from my presentation. So how these reports are useful in clinical practice. These are the guiding cues. As I earlier said, this is not the confirmatory diagnosis. This is not the final diagnosis. For the final diagnosis, you can send your patient to the hematologist. You can make the further investigations like bone marrow biopsy, like serum iron, serum ferritin, the IBC, and etc. and etc. So many investigations are there to rule out. So these are the guiding cues only. Then differential diagnosis needs further testing. Then microcytic, here we can make only and only provisional diagnosis that I will show you now. The microcytic means mostly your patient is suffering from iron deficiency anemia. When you can see the microcytic RBCs on your smear, then mostly your patient is suffering from iron deficiency anemia. Then when microcytes only on the smear, macrocytes as well as teardrop and many other cells are looking, then at that time we can say that mostly the patient is having B12 as well as folic acid deficiency. When anisocytosis is there, moderate to severe on your smear, then at that time you can say that the mixed nutritional deficiency is there or due to any other reason. Then poikilocytosis means change in shape of the RBCs. At that time, when there is a moderate to severe poikilocytosis, you can say that the patient is suffering from severe nutritional deficiency or any other reason you have to find out. And when mixed anisopoikilocytosis is there, then at that time, you can say that this is the advanced stage of anemia. The patient needs the further investigations. So advise your patient for the further investigations in hematology, and then only you diagnose the patient of such type of peripheral blood smear. Now, coming towards the last session, that is hematology Ayurvedic practice. Now, how we can use all the things in our practice, because this is the modern era, and this is the I think this is I can say that while practicing in this modern era, evidence is very, very, very necessary. So
This is my request to all the students who are listening, all the students, those who are UG students or PG students. This is my request that please read pathology, at least basic pathology for your practice. Don't do don't do the blind treatment, blind Ayurvedic treatment in your practice. Don't give the medications blindly. So this is my genuine request to the students that read pathology, at least basic pathology in details. This is very important in our practice. So hematology, what is the use of hematology in our Ayurvedic practice is evidence-based Ayurvedic practice helps to ensure the right treatment is given to the right patient. Then iron therapy is not always the choice of drug for all the types of Pandu or anemia. What I have seen many times, either maybe this is my personal opinion, but I have seen in many of the times that when the patient comes to us with signs and symptoms of anemia, that is pallor, patient is saying that giddiness is there, or a pallor is there, fainting is there, anorexia is there. When patient comes to us with the typical findings of anemia, or I can say typical findings of Pandu, which are given in our Ayurvedic literature, many of the times what happens, we are given only and only iron kalpa. That is Navayas Loha, then Dhatradi Loha, Punarnava Mandur kalpa is there. I cannot say that only and only this medicine we use. Other medicines also useful, other medicines are also given by other physicians, but I have observed in many of the cases that I'm going to tell. So this happens many of the times. So my request for the students is go for the research in this field. Means what? If you have done the research that these Loha kalpas are useful only and only in the iron deficiency anemia. Apart from that, maybe these Loha kalpas are useful for other type of anemias also. Don't know at this time. We don't know at this time. So there is a very much large scope for research in this field, in this hematology field. So PG students can take the researches which are important for the practice as well as the research in Ayurveda. So this is my request for the PG student. Then differential diagnosis sets good line of treatment. According to the differential diagnosis or from this peripheral blood smear, we can differentiate each type of anemia and it sets a good line of treatment for the practice. Now, what is the future scope and research in this field? According to the type of anemia detected by the blood smear on bone marrow biopsy, we can correlate and confirm the type of Pandu in our practice. Can we make the model of formulations for treatment according to each type of Pandu? And further future studies can be carried out to understand the role of Ayurvedic formulations for the management of modern types of anemia. See, this is somewhat complicated as maybe complicated looking to the students, but this is very, very simple. What you have to do that you can take one basic research that regarding the type of anemia and the type of Pandu. Means detected type of anemia detected by the blood smear, CBC and blood smear. And then we can take the signs and symptoms of our Pandu. And in each type of Pandu, we can see, for example, Vatach Pandu, if you diagnose your patient as a Vatach Pandu, then make the peripheral blood smear of all the cases of that Vatach Pandu, and then see which type of anemia was there. If you can take Pittach Pandu patients, again make the diagnosis as a Pittach Pandu by sign and symptom, whatever maybe, and make the blood smears of that all the patients which you have diagnosed as a Vatach Pandu, see all the cells in peripheral blood smear and see the provisional diagnosis from peripheral blood smear. Again, see the Mrut Bhakshanas Pandu, see the patients, make the blood smear and make the diagnosis. In this way, you can take this topic for the research and then only I think that this will be the evidence for practicing anemia in Ayurveda. So in today's era, evidence-based practice is very, very necessary. So my request to the student again that
make the studies which are very good studies to detect the type of anemia. From this presentation, you can take the, what I can say that you can take the energy, you can take the some, what I can say that some concepts from this presentation, and you can make your research projects, small research projects. If UG students are listening, you can take a very, very small research project by the sample size of 20, by the sample size of 30 minimum. If PG students are there, they are listening, you can take minimum 100 to 200 patients also, and many of the research scope regarding this anemia in our Ayurveda. So in the presentation, my presentation is completed, I think, and this future scope for research in this field, I think PG students keep in mind for this type of research. So thank you very much, all the listeners, all the participants as well, and thank you again, all the organizers, all the team, especially head of the department, Dr. Archana Gharge madam, Dr. Anil, and Dr. Jai Kini madam, and all the faculties of YMT College, and principal and all the faculties. Thank you very much for silence listening to me and participated in this webinar. Thanks again. If there are any questions, you can take the questions, Dr. Anil. Okay, ma'am. Thank you so much, madam, for providing such a wonderful and illustrative knowledge on such a vast topic. Now, a small request to all that the feedback forms are sent into the chat box. Kindly submit feedback form at the end of session. Now, continuing with the session, I would like to welcome and introduce our today's chairperson for third session, Honorable Dr. Rajiv Mundane sir, to chair the session. Sir has completed his BAMS from Sri Gurudev Ayurved Mahavidyalaya Gurukunj. Sir has completed MD in Rognidan from Government Ayurved College, Nagpur. Sir is working as a principal, head of the department, professor in the Department of Rognidan at DMM Ayurved College, Yavatmal. Sir is a MUHS recognized PG guide and also PhD guide. Sir has served as a principal for last 17 years. Sir is a Senate member with MUHS Nashik for 2010 to 2014. Sir is also Board of Studies member in Paraclinical Board with MUHS Nashik for 2010 to 2014. Sir has published more than 50 research papers in peer-reviewed and index journals. Sir has also attended various national and international seminars as a guest speaker and a chairperson. Once again, I welcome Dr. Rajiv Mundane sir. Over to you, sir. Hello. Yes, sir, you are audible. Video not starting. Video not starting. हेलो नमस्ते. Yes, sir. Yes. आज जो रोगनिदान डिपार्टमेंट डॉक्टर H.G. पोल फाउंडेशन YMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खारगर नवी मुंबई, इनके तरफ से जो आज का सेमिनार आयोजित किया गया है, उसमें नैदानिक साधनानी ये जो टॉपिक लिया, ऑडियो चालू करो प्लीज. नहीं स्टार्ट हो रहा. राजीव मुंदाने सर नहीं स्टार्ट हो रहा. नैदानिक साधनानी ये जो डायग्नोस्टिक टूल, इसके ऊपर जो आज का वेबिनार आपने अरेंज किया है. सर एक्सक्यूज मी सर, आपका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए. नहीं हो रहा है मैडम. नाही खरंच ऑफ केलं सर. तुमच्याकडून ऑफ आहे. मुंदाने सर को ऑन करने के लिए बताइए, वीडियो ऑन करने के लिए बताइए.
वीडियो Yes, sir, ऑन yes. कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। हाँ राजीव सर, हाँ, प्लीज ऑन योर वीडियो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वीडियो नहीं हुआ ऑन हो रहा। ठीक है। हाँ, तो आज जो अपने आयुर्वेद के अंदर जो बताया गया है कि रोग माता परीक्षित तदनंतर औषधों, अरे निदान सब्जेक्ट को बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कोई सी भी दवाई पेशेंट को शुरू करने के पहले पहले सब पेशेंट का जांचना चाहिए। उसके वास्ते अपना जो है कंसंट्रेशन अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस मेकिंग है वो रोगी परीक्षा विधि इसके ऊपर किया गया है। रोग का परीक्षण कैसा करना है, रोगी का परीक्षण कैसा करना है। रोगी का परीक्षण करने के लिए हर संहिता में बृहत्त्रयी हो लघुत्रयी हो इसमें हर प्रकार की परीक्षा बताइए। वो त्रिविध रहो, चतुर्विध रहो, षड्विध रहो, अष्टविध रहो, ये सब परीक्षा का अंतर्भाव अपने इसमें किया गया है। उसके साथ साथ ही 10वीं परीक्षा भाव 10वीं परीक्षा इसका भी समाविष्ट किया गया है। और पूर्वजन से वो नाड़ी परीक्षा रहे, कौन सी भी परीक्षा है, इसके ऊपर से डायग्नोस्टिक किया जाता था। मगर अभी जो नए नए स्टूल आ गए हैं, जैसे पोद्दार सर ने बताया कि अपना जो नया रिसर्च है, इनोवेशन आया, इसका उपयोग तो आयुर्वेद में करना चाहिए। इसकी वजह से सबकी अपनी जो दृष्टि है, ये मॉडर्न जो कोई इनोवेशन है इसके इसमें डाल के, जैसा आखिरी में मैडम ने बताया कि हेमेटोलॉजी की आयुर्वेद प्रैक्टिस क्या यूज है, ऐसा तो इसका अंतर्भाव ये डायग्नोसिस इसमें होना चाहिए। और करके अपने जो डायग्नोस्टिक्स नए स्टूल है और जो कि आयुर्वेद शास्त्र में बताए, इसका जो कोऑर्डिनेशन करके इसका ये जो सेमिनार वेबिनार आपने आयोजित किया है, सही में आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं पर्टिकुलरली अर्चना मैडम और पारेकर, आप सब टीम आपकी, आपने जो अरेंज किया उसके वास्ते आप अभिनंदन। आज के जो आपके लेक्चर फैकल्टीज बताइए, वो फैकल्टी भी अच्छे से फैकल्टी ने अरुण दुधमल सर ने भी परीक्षा के बारे में बताया, अर्चना मैडम ने भी बताया, और अभी तो मेघडंबर मैडम ने विस्तृत बताया। मुझे ऐसा पहले लगा था कि अभी हमारा तीसरा लेक्चर है, मैडम का तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और आखिरी सेशन है। आखिरी सेशन कहीं भी जाए तो वो जरा सबके लिए ऐसा होता है कि कब खत्म होता है, मगर ये सेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खत्म ही नहीं होना चाहिए। सही में मैडम, यूजी और पीजी, यूजी का छोड़ दो, यूजी को तो अपन बेसिक नॉलेज देते ही है, पर यूजी के बजाय पीजी को जो भी सिलेबस में दिया है उसके वास्ते ऐसे लेक्चर अरेंज करना इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जो हेमेटोलॉजी पर आज जो लेक्चर दिया है, सही में आपका प्रशंसनीय है। आपका स्टडी, आपका कलेक्शन सही में अच्छा है। मुझे आज के जमाने में, मैं तो हर वक्त बोलता हूँ, पिछले वक्त भी बोलता था कि हमको जो जैसा था, हमारा पीजी जो है हमको पैथोलॉजिस्ट करके सामने मार्केट में लाना है। जैसा सर्जरी को अभी परमिशन मिली है, जैसा वैसी परमिशन अपन को भी मिलना चाहिए। उसके वास्ते आप सब लोग मिलके, अपन सब मिलके अपन को ट्राई करना है। और सीसीएम के लेवल पर दिल्ली में, महाराष्ट्र में, सब जगह अपन को ये करके अपने स्टूडेंट को पैथोलॉजिस्ट करके मान्यता मिलना चाहिए। इसके वास्ते अपन को प्रयत्न करना है और वो करना भी है। मगर जब अपन अपना स्टूडेंट पैथोलॉजिस्ट करके समाज में लाना है तो उनको ये टाइप का, ये ऐसा अपन को पढ़ाना भी चाहिए, ये स्टाइल में अपन को बताना भी चाहिए। कितना अच्छा बताया आपने सब, म्हणजे आपने तो बोला है सब, इतना हेमाटोलॉजी इतना वास्ट है कि सब तो आज के आज मैं बता नहीं सकती। उसमें का सिर्फ आरबीसी मैं आज लेने वाली हूँ, और एक आरबीसी के ऊपर आपने इतना अच्छा सब बताया। उसमें उसके मेगालोब्लास्टिक लो, एस्टियोसाइटोसिस लो, पॉलियोसाइटोसिस लो, ओलोसाइटिस लो, रेटिकुलोसाइटोसिस, साइडर, और इसका जो आपने स्लाइड बताई है, मेरे को ये बताओ, इतना अच्छा लगता है कि मुझे पायोकिलोसाइटोसिस स्टार, मैंने जैसे ऐसा ऊपर देखा स्टार की तरफ, रात को चांदनी की तरफ, तो मेरे को ऐसा दिखेगा, वैसी स्लाइड आपकी ऐसी दिखने लगी मेरे को, स्टार 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 ऐसे। ऐसा ऐसे इतना अच्छा कलेक्शन आपका है। थैंक यू सर। जो बताया बहुत ही अच्छा बताया मैडम। और आज अपन पीजी गाइड जो है, पीजी के जो बताने वाले हैं, तो ये अपन को जो नई पीढ़ी तैयार करना है कि यही ढंग से करना है, अपन सब यही ढंग से करेंगे।
आज ये करने के वास्ते प्रोत्साहित करने वाला आपका आज का लेक्चरर हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अभी आरबीसी होए, प्लेटलेट होए, ये सब पर आपका ऐसा ऐसा एक लेक्चर आपका हो जाए। यस सर, बात रहेंगी हमारे पीजी स्टूडेंट के वास्ते भी यस सर, नई डायरेक्शन मिलेंगी। तो या बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर हुआ और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ मैडम। आपका वर्क है ये जो प्रेजेंट करना है, खुद का वर्क के सिवाय कर नहीं सकते। निवड़ किताब पढ़ के अपन बता नहीं सकते, उसके वास्ते खुद का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आपका जो माइक्रोस्कोपिक एक्सपीरियंस है वो आपने आज प्रेजेंट किया, वो सही में स्टूडेंट के वास्ते, फैकल्टी के वास्ते और स्टाफ के वास्ते उपयोगी हुआ है। निश्चितच आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में ये आज का ये आपका लेक्चर नए में कुछ ना मदद करने वाला है। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं और वाईएमटी कॉलेज के निदान डिपार्टमेंट को भी अभिनंदन करता हूं। आपने आज का ये अच्छा वेबिनार अरेंज किया और इसका निश्चित ही फायदा हुआ है। और मुझे ऐसे सेशन में मैं तो बोलूँगा ऐसे फैकल्टी के इसमें चेयरमैन बनने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य समझता हूँ। यदि मैं नहीं ऑडिबल है या मैं वीडियो मेरा नहीं स्टार्ट हो रहा तो भी ऑडिबल है आपके साथ, मगर मैंने आपको सुना है बहुत अच्छा हो गया है। और मैडम मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। नांदेड़ का वर्क मुझे मालूम है, आप तो अभी आरे पोद्दार में हैं, हर जगह आपका वर्क अच्छा है, ऐसा ही रहे, आपका कैंसर का वर्क रहे, सब आपका आपके सब वर्क के वास्ते मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। हम सब निदान फैकल्टी की वजह से, सब हमके महाराष्ट्र की जितनी भी निदान की फैकल्टी है सबके ओर से हम आपको शुभेच्छा देते हूँ। और ऐसा ही आपके हाथ से रुग्ण सेवा हुए ये शुभेच्छा धन्वंतरी चरण की प्रार्थना करके आज मैं मेरे दो शब्द बंद करता हूँ। पुनः वाईएमटी कॉलेज के निदान डिपार्टमेंट को मैं थैंक्स। ओके मैडम, थैंक यू। Thanks, sir. Just 1 minute, Dr. Anil. Just 1 minute. I want to say. Yes, Yes. ma'am. Yeah. Thank you very much, Dr. Mundani, sir, for kind appreciation for my presentation, because this type of appreciations gives us more value or more energy to work more. So thank you very much, Dr. Mundani, sir, for your appreciation. Thanks. All the best, madam. Thank you so much, Yes, ma'am. yes, yes. Thank you so much, sir, for enlightening on this topic and your guidance. Now, I hand over my screen to Dr. Zaikini ma'am for the vote of thanks. Ma'am is working as Associate Professor in the Department of Rognidan at YMT Ayurvedic Medical College, Khargar. Ma'am is also PG Coordinator. Over to you, ma'am. Thank you very much, Dr. Anil. Am I audible? Am I audible properly? Yes, Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Now we have reached Towards the end of this beautiful function. towards the end of this Myself, beautiful Dr. Zai function. Kiran Puri, Myself, Dr. Zai Kiran Puri, Associate Professor as well as PG Coordinator and Director Research of YMT Ayurvedic Medical College. I'm here to present the vote of thanks for today's Naidanik Sadhanani National Webinar. I would like to thank our guest speakers, that is Dr. Budmal sir, Dr. Gharge madam, Dr. Jyoti Megdambar madam. An interesting thing. It gave deep insights into the topics and also revealed some interesting facts. I would like to thank our chairperson, Dr. Subhash Raghe sir, Dr. Vijay Poddar sir, and Dr. Rajiv Hundane sir also. Sure that the precious knowledge from all chairpersons, okay, that will definitely help us in our studies and future. Once again, I would like to thank all esteemed speakers and chairpersons for taking out time from their busy schedule and enlightening us with their knowledge. Thank you very much. I would like to thank to our chairman, sir, respected Dr. Judy Paul, sir, Principal Dr. Sanjeev Yadav, sir, Vice Principal Dr. Naidanik Sadhanani, sir, for giving permission to organize this webinar. And special thanks to our organizing committee, that is our organizer, Dr. Archana Bharge madam,
and my department colleagues, Dr. Shivani Madam, Dr. Snehal Madam, Dr. Amini Sir. Also, I thank you all attendees present here for paying your attention and for learning. I also show my gratitude towards our IT department, our non-teaching staff for their support in this online platform. Thank you one and all. I would like to end my speech here and declare this webinar is completed. Thank you very much. Have a good day.